मॉडर्न से सवाल आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म से सवाल आएंगे ट्राइबल रिवोल्ट से सवाल आएंगे, मराठा कल्चर से सवाल आएंगे, 1857 के रिवोल्ट से सवाल आएंगे, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म और मिलिटेंट नेशनलिज्म से। व्हेन यू आर कॉपिंग समथिंग, पता नकल में भी तो अकल की जरूरत होती है ना, बिकॉज दे आर प्राउड ऑफ व्हाट दे स्पीक, they are proud of what they wear, they are proud of what they eat. मुस्कान करने के साथ बच्चे बड़े सवाल पूछ रहे थे कि मॉडर्न से कैसे कहानी शुरू होगी, और बड़ा आप लोगों के दिलों में वो है। सी अव्वल इंटरेस्टिंग है पहली चीज, ठीक है, आप लोग मॉडर्न से रिलेट कर पाओगे। इन इटसेल्फ इफ यू विल सी हिस्ट्री इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू रिलेट टू इट। फाइन, सो व्हेन इफ आई विल स्टार्ट विद एंशिएंट एंड यू विल स्टार्ट स्लीपिंग, ऑलरेडी द टाइम ऑफ द क्लास इज 2 to 4:30, है ना। सेकेंडली, मॉडर्न इज मोर एनालिटिकल इन नेचर एज कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडिवल। अंडरस्टैंड दिस। एंशिएंट एंड मिडिवल का जो पार्ट मेंस में आता है, that is in the correlation with art and culture. डायरेक्टली एंशिएंट का कोई सवाल नहीं आएगा या मिडिवल का कोई सवाल नहीं आएगा। जो भी सवाल एंशिएंट मिडिवल का आएगा मेंस में, वो आर्ट एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में होगा। टेम्पल स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, या लिटरेचर का इम्पैक्ट ऑन द मिडिवल सोसाइटी, हाउ द लिटरेचर इन द मिडिवल सोसाइटी वाज मिडिवल पीरियड, मिडिवल इंडिया वाज रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस इन द सोसाइटीज दैट वर हैपनिंग in 14th and the 15th century. Or how, like, discuss the role of Palas in spread of Buddhism in Bengal. Now, this is whatever questions that you will get in history, especially from ancient and medieval, in your mains examination, that is all based on what? Art and culture. So there you have to establish a correlation between the two. First thing, the questions that you will get from ancient and medieval in prelims, it is all going to be factual, straightforward questions होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इन राजाओं के बीच क्या था, इस टेम्पल आर्किटेक्चर का क्या मतलब था। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आईवीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसकी सोसाइटी सेक्युलर थी नहीं थी, टेम्पल थे नहीं थे, काउ का एग्जिस्टेंस था नहीं था, इस तरीके के सवाल आते हैं, which are more factual in nature. So for that purpose, because your art and culture is already being completed, so for that reason this is, but हाँ, क्योंकि आपको एक ग्लिम्स मिल चुका है पहला आर्ट एंड कल्चर का, है ना। एंड आई वांट कि मॉडर्न पे थोड़ा सा फोकस हो। क्यों हो? क्योंकि मॉडर्न से सवाल आ नहीं रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ सालों से, दिनों से इन द सेंस कुछ प्रीलिम्स से जो हम देख रहे हैं कि मॉडर्न से सवाल कम है, वैसे आएंगे भी नहीं, कम ही आएंगे, नहीं आएंगे। और जो आएंगे वो आएंगे 1905 से पहले के। उसका रीजन है, इफ यू विल आस्क द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर 1905, यू कैन नॉट डिलीट कांग्रेस आउट ऑफ दैट। यू कैन नॉट आस्क विदाउट नेहरू, you cannot imagine history of India without Nehru after 1914-15. I have to talk about it. And if the question is coming from that part, that will be questions like comparing the personality or ideologies of Gandhi, maybe with Tagore, maybe with Subhash Chandra Bose, or maybe with Ambedkar. Now the nature of question will be like this. एक बार गांधी को कंपेयर कर दिया कार्ल मार्क्स से, आया है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। What were the similarities in the ideology of Gandhi and Karl Marx? Understand? See, government का जो नेचर है वो इम्पैक्ट डालता है, that what is going to be the nature of questions. Why? Who appoints the member of UPSC? Are president is doing what? Nothing, na? Without cabinet, without council of minister, what they are doing? They are doing nothing. Of course, with the consultation of council of ministers, simple. So they are going to please, na? And of course, if for 4, 5, 6, 7 years, if they will continuously not ask something which is related to Indian National Congress, why the student will study about that? So automatically, see, it is not always necessary that you make a policy to wipe out something. Your actions can also create such, chain reactions which may wipe out certain things.
तो सर मॉडर्न से सवाल नहीं आएंगे कहाँ से आएंगे? मॉडर्न से सवाल आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म से सवाल आएंगे ट्राइबल रिवोल्ट से, सवाल आएंगे आपके मराठा कल्चर से, सवाल आएंगे 1857 के रिवोल्ट से, सवाल आएंगे फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म और मिलिटेंट नेशनलिज्म से, विच इज़ मोर अबाउट लेट्स से सावरकर और वो वाला जो फेज था। प्लीज कम इन, उन फेजेस से सवाल आएंगे। Okay, so that is why understanding modern history, and what we will do is, we will first, there are let's say 2 phases in this whole process of studying history. We have 4 major topics, that is ancient, medieval, modern and post-independence. What we will do is, first we will finish ancient, first we will start, today we are going to start with modern, and in that continuation only we will finish post-independence. 47 and then we will continue. ठीक है, तो वो अलग से ब्रेक नहीं देने वाला मैं कि पहले मैं एंशिएंट मिडिव ये पढ़ाऊँ फिर ब्रेक दूँ। हाँ, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल गिव यू वन थ्रेड व्हेन वी विल स्टार्ट मॉडर्न एंड आई विल एंड मिडिवल ऑन दैट पर्टिकुलर थ्रेड ओनली। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो उसका टेंशन छोड़ दो कि सर वो लिंक कैसे बनेगा यहाँ से वापस आने का, बिकॉज दैट विल हैपन। सो फर्स्ट विल डू मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री which is more means oriented, which requires something more than being factual, and then we will do what? Then we will do ancient and medieval. Ancient and medieval is not going to take much time because it is all about factual information. Reason, आपको उससे relate करना आपका काम है। आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ चुके हो, तो जो सवाल मेंस के लिए एनालिटिकल अप्रोच के लिए आएंगे, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो आर्ट एंड कल्चर ओरिएंटेड है। तो मेरा बहुत बड़ा काम वैसे ही हो गया, ठीक है। How many of you joined, are seeing me for the first time? You, 2, 3, 4. Yes, you will also. What's your good name? Rohit. You are from? I'm from Bangalore. You are from Bangalore. Okay. So it is okay for you to, if you go bilingual, like थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी चलेगा? Great. So what you have done, Rohit? Sir, I have finished my bachelor's of commerce. Okay. From? Bangalore University. Bangalore University. Great. And I've been working as a fund accountant in a for 2 years. Okay. And I've been a teacher in finance for 1 year. Okay. Now I'm a consultant for the same company. You're a consultant for the same company. What brought you here? As in not at this place, as in UPSC preparation. So it has been what I have been doing in the past 4 years for my planning. So this was my planning. Okay. So that was a part of the planning that we. I can clear my prelims, so I can clear my prelims. Okay. So I was happy with that. Why you not clear the prelims? I didn't prepare them. वो तो ठीक है, वो तो समझ में आया, जब नहीं हुआ तो प्रिपरेशन नहीं हुई, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? I didn't have the time. I was in college then. Fine. Yes. Joel. Yes, you're from? Hi, which place? Hey, great. Thank you. You're there. Which place, Arunachal? Okay, great. So what you have done? Finished my bachelor's in politics. Okay. Okay. I just finished recently last, on the month of June. Okay, this year only you have graduate now. Congratulations for that. And what brought you here? Places. Why? Why UPSC? Why? What so? What's in this? I want to do something better in my life. Great. Sir, my name is Pratish Nilifukan. So I come from Assam. Dibrugarh district of Assam. So I did my BTech in Electronics and Communication Engineering. Then I did my advanced certification in Data Science and Artificial Intelligence from IIT Madras. Okay. So then I was working in the government of Assam as member secretary of State Advisory Council for World Bank funded projects of government of Assam. Okay. Then So then what did you hear? From my Why? That is what I'm asking you. Actually, I resigned from the service due to some differences with the current ruling government. Good. Political Good. differences. But that, don't you think that the government will change one day and you can work? No, sir. It was. I do think that the government would change, but there were some difficulties. And don't say this in your interview. No, I definitely not say. That's not good for you. Yes. I'm Palak from Delhi. Okay. Palak. Ah. Okay. I'm doing my graduation
Aurobindo College. Okay. Great. Who was Sri Aurobindo? You are in a history class now. So what brought you here? What you want? वो तो ठीक है, वो तो माँ बाप तो चाहते ही ना बच्चा हमारा जो है वो चांद पे चला जाए। तुम क्या चाहते हो? इम्पोर्टेंट ये है। पक्का? Good. Great. So today we are going to start with modern history. और तो कोई नहीं है? हाँ, similar faces. So we're going to start with modern history. But before we start, I just want to understand one thing. What do you mean by modernization? बताओ। चेंज। तो इसको चेंज वाली हिस्ट्री क्यों नहीं बोल देते हम? How just advancement in technology. So मुझे एडवांस हिस्ट्री क्यों नहीं कह देते फिर? Expansion or production capacity in industries. Is it just that is what modernization is? A mix of industrialization and Urbanization. urbanization. When India got independence, more than 3/4 of the population was living in villages then. Before that, we were exporting 27%. So we had degraded. We had No. I'm asking what is modernization? Be a bit loud. It's living up the older traditions or systems of living and picking up the like new systems or things which should be like beneficial in the near future. Okay. Cultural changes accompanied by technological innovations and also globalization. Okay. Mm-hmm. some of the valuable money was before land. So that's the money that the country will get upset. तो ये लेकिन हम तो उससे पहले की बात कर रहे हैं। वो तो मैंने जो आपको कहानी बताई थी वो तो 1945 के बाद की कहानी है और मेरा भी मनी से वो कंसेप्ट है ही नहीं। माय क्वेश्चन इज सिंपल, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? Faster growing economy. When the living of the persons changes according to the current influence of the ideas. Okay. And how that change occurs? Change able to Yes, those watching online, they are also supposed to answer. Increase your typing speed and give one good answer. Yes. थोड़ा सा और पुश करो। Society changes from primary to the tertiary and secondary. मॉडर्नाइजेशन तो सुना होगा ना, कमेंट तो मारा होगा, कमेंट पढ़ा होगा, बड़ी मॉड बन रही है। बताओ। Political developments, which includes liberalization ओके। and more open society. बड़ा डेंजरस है। फ्री सोसाइटी। So faster growing economy. Is it just modernization? Like, if I say I am modern, what does that mean? What does that? Or you say that, sir, I am someone who is modern. What does that signifies? Because before we start understanding modern history, we should understand now what exactly modernization is all about. Replacing orthodox practices and beliefs. Okay, that is reformation, Things are more connected to the outside world. So kind of. जो new technologies introduce होती हैं उसके साथ खुद को भी capable करना means उन्हें जानना कि कैसे use करते हैं. This is called modernization. ठीक। See,
what you said is the correct side of that. When we say modernization in ideal terms, जब हम बात करते हैं कि modernization क्या है, what is modernization in ideal terms? It is what it is changing or adapting new technology for betterment of life. This is one part of that. Without compromising with your cultural or your roots of origin. There are two aspects to that. When we say modernization, it means that yes, I'm well versed with the new technology, because for every generation will feel that I am modern if you will compare it with previous 2-3 generations. We will become orthodox after 3 generations. Fine. 3 generations as in the generation which is living today. Let's say people who will come in 2300 or 23rd, 24th, or 25th century will call us orthodox. Like we used to call the people of 18th, 19th century or 20th century as orthodox. Right. So modernization has two aspects. Number one, that there is change in technology. You have to adopt it. You have to adopt it, or you will be lost somewhere in this whole process. But in doing so, you will not compromise with your cultural roots. That is what real modernization is, or else it will be called as westernization. और बैंड ही बज गया ना वो, तो इसीलिए तो ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है. यही तो प्रॉब्लम हुआ ना हमारे साथ. I'll tell you what modernization is. And this one example I give in every class. The most loved and the staple food for our country is dal chawal. Agree? That can change into rasam chawal when you go down south. But it is a combination of lentil with rice. Agreed? असम में भी है, दिल्ली में भी है, साउथ में भी है, नॉर्थ में, सब जगह. अच्छा, पहले दाल चावल किस पे बनता था? चूल्हे पे बनता था. राइट? फिर दाल चावल बनते बनते जो है हमने देखा कि थोड़ा सा और एडवांसमेंट आया, केरोसिन स्टोव्स आ गए, उस पे बनने लगा. फिर और थोड़ा सा एडवांस हुआ तो हमने देखा एलपीजी आ गया, गैस सिलेंडर्स आ गए. ये हो गया. अच्छा, फिर और एडवांसमेंट हुआ तो पहले बॉयल होके बनते थे, फिर प्रेशर कुकर आ गए. फिर क्या हुआ? फिर सोलर कुकर आ गए. फिर क्या हुआ? फिर राइस कुकर्स अलग आने लगे. देन माइक्रोवेव्स आ गए. नाउ वी हैव और एडवांसमेंट विद स्टीम्ड एंड ऑल दोस थिंग्स. न्यू थिंग्स आर कमिंग. बट दिस इज व्हाट, फ्रॉम अ चूल्हा लकड़ी का टू लेट्स से अ माइक्रोवेव, लेटेस्ट technology. Let's say we have adopted every technology, but we have not changed our food, that is dal chawal. This is real modernization in absolute terms. This because that relates us with our culture. That's the part of our life, right? This is south mein. I went to Bangalore. I found this huge. It's a vegetarian as well as non-vegetarians, both paradise is there. But पहले इडली बनाने में it was now they have factory, they have machines, big machines. Thousands of idlis can be made in one go. All right, the big near that what is that? Rameshwaram Cafe. It's one of the finest example if you want to learn about how entrepreneurship is done and how you maintain your quality. This Rameshwaram Cafe is one of the finest example in Bangalore. तो पहले वो किस में बनाते थे? पहले वो इट इज़ वेरी ओल्ड. नाउ दे हैव ह्यूज कुकर्स एंड दिस ह्यूज स्टीमर्स इन विच दे मेक इडली. बैचेस बनता है. क्या चेंज नहीं हुआ? बिकॉज वो दैट कल्चर से रिलेट कर रहा है. दिस इज मॉडर्नाइजेशन. अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम विद अस इज दैट वी गॉट कंफ्यूज बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. एंड व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज ठीक है, हमने एक नैरेटिव बना लिया. वी हैव मेड वन नैरेटिव दैट देयर इज इफ वी कॉपी द ब्रिटिश विल लुक कूल. जनरल नैरेटिव. बट दिस इज नॉट द केस यार. फॉर एग्जाम्पल, विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीवन, ओके, फॉर एग्जाम्पल, alcohol is a part of their life. Having wine or having different types of
alcohol, liquor is their part of their life. Am I right? It's a part of their culture. It's a part of their culture. Now, we opted that. What is the use of that in their culture? Because they live in a subtemperate zone. They come from a cooler place where summer means 18 to 25 degrees centigrade. In that, and where the winters are too harsh. In that scenario, what they need, need some amount of liquor to keep themselves warm from inside, especially when even in that time when there was no industrialization, when they don't have room heaters, when they don't have other means to keep themselves warm, they use that, and gradually that became the part of their culture. We did adopted that, और हमने हर जो है without taking rationality in that. When you're copying something, पता नकल में भी तो अकल की ज़रूरत होती है ना. When you're copying something, it should be rational. For example, their attire. We opted their attire. हमने देखा अंग्रेज छोटे कपड़े पहनते हैं, हम भी पहनेंगे. वो छोटे कपड़े कब पहनते हैं? वो समर्स में पहनते हैं. उनका समर्स का मतलब होता है 23, 24, 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, उनका समर जो है वो बहुत कम पीरियड के लिए आता है, सो दे वांटेड टू हैव एन एक्सपोजर टू सन. मैन, यू आर बर्निंग इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 51 दिल्ली क्रॉस, और तुम छोटे, अब जल जाओगे, सन बर्न हो जाएगा. रेशनैलिटी नहीं ली, इसीलिए ना अंग्रेज बन पाए और हिंदी हमें आती नहीं. दिस इज रियलिटी. I have something like, if you see people of South, anything which is like the Dravidian states, they are better because they are proud of their culture. Because they are proud of what they speak, they are proud of what they wear, they are proud of what they eat. मतलब तंदूरी मोमोज, व्हाट इज द कंसेप्ट यार? क्या बना दिया तुमने? एक चाइनीज चीज को तंदूर में डाल दिया. They have never done this with idli. They'll never say तंदूरी इडली. मार के भगा देंगे. सर दिल्ली में मिलता है. दिल्ली में सब मिल जाता है तंदूरी. Understand? But if you talk about दिल्ली में कुछ ढंग का ना साउथ इंडियन नहीं मिलता, सब बेकार मिलता है. हाँ, रियलिटी है. That is where we have lost. Why we are lost? Why we don't progress like the Germans? You go to Germany, like one of my relative, he got admission in MBA in Germany this year. His session will start in December, and from last year he's learning German. Why? Because he said English वहाँ काम नहीं करती, and that's true. हाँ, English काम नहीं करती. Germans are anywhere you go in Europe. Everywhere in वहाँ इंग्लैंड के अलावा अंग्रेजी बोलना ना, you are like third grade people. हाँ, इंग्लिश बोल रहा है. हाँ, that's true. कहीं नहीं है, and that is the reason. See, वो एक अलग लेवल पे हैं. हम तो यहाँ अंग्रेजी भी नहीं जानते ना ठीक से, ना लिखना, ना बोलना, ना पढ़ना. हमने तो हिंदी को अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया. हिंदी आती किसको है? हिंदी आती है? आप अव्वल तो हिंदी बोल ही नहीं रहे हो. व्हाट वी आर स्पीकिंग स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया इज हिंदुस्तानी. एंड हिंदुस्तानी जो ज़बान है उसमें उर्दू भी है, उसमें ब्लेंड ऑफ हरियाणवी भी है, हिंदी भी है, संस्कृत के भी वर्ड्स हैं, फारसी के भी वर्ड्स हैं. इधर थोड़ा सा नीचे चला गया. देयर आर 13 डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी. अभी लैंग्वेज पढ़ा होगा ना आर्ट एंड कल्चर में. सी, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाबी के बाद एक हिंदी बेल्ट शुरू होता है. अच्छा, पहाड़ी हिंदी अलग है, मैदानी हिंदी अलग है, ब्रज की हिंदी अलग है, अवध की हिंदी अलग है. बिहार की तरफ चले जाओगे तो मैथिली जो उस तरफ है सीमांचल और इस तरफ जो बोली जा रही है वो हिंदी अलग है. जो झारखंड की तरफ बोली जा रही है वो हिंदी अलग है. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. द प्रॉब्लम इज वी समवेयर आर लॉस्ट. दैट इज बिकॉज हमने इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर दिया. The foreigners that we should know or we should be discussing, हमारे लिए foreign का मतलब क्या है? I'll tell you. हाँ? इंडिया से बाहर, यानी कि आप फॉरेन का मतलब समझते हो लेवाइस. हम फॉरेन का मतलब समझते हैं पिज्ज़ा,
हमारे लिए फॉरेन का मतलब है बर्गर। कॉमन नरेटिव की बात कर रहा हूँ. व्हाट वी शुड हैव बीन डिस्कसिंग इज एरिस्टोटल एंड प्लेटो in our curriculum. That is what understanding westernization would have been or modernization would have been. Jefferson या थॉमसन का नाम कितनों ने सुना होगा? I don't know. That is the reason why many of the people who came starting UPSC preparation, they struggle because this system is not Indian. This is a system of selection or the procedure that has been devised by the British. So and the same education system. So your education system teaches you to be a good, not a good learner, but they are just checking whether your memory is right or not. From your KG to your PG, what they have checked is your memory. याद करके आना. 6th 7th में 5th तक बोलते हैं टेबल याद करके आना. मतलब जिसको 20 का टेबल याद नहीं, उसकी औकात ही नहीं होती है क्लास में. हाँ, राइट. और तो पहले 3rd 4th क्लास में क्या बोला? कल टेबल याद करके आना. 7th 8th में आके बोलते हैं मैथ्स याद करने की चीज नहीं. सर शुरू तो आप ही ने करवाया है. तो दे आर नॉट. द प्रॉब्लम इज व्हाई वी ग्रेजुअली जो इंडियन यूथ है या इंडिया का जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें हम अच्छे रिसर्चर्स या अच्छे वो क्यों डेवलप नहीं कर पाते? वो इसीलिए नहीं कर पाते, वो ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ. बच्चों को पिकनिक में ले जा रहे हैं, कहाँ? जू में, पार्क में. अबे ले जाओ यार, दिल्ली के आसपास इतने म्यूजियम में ले जाओ. हर स्टेट में हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको साइंस की तरफ, जो उनको लॉजिक की तरफ अट्रैक्ट करे. और पिकनिक का मतलब होता था घर से 100 रुपये लेके आओ, जिसका तुम्हें एक सैंडविच मिलेगा, एक जूस मिलेगा, और जाके खेल लेना. ये खेल तो हम शाम में भी सकते थे. एंड what Americans doing? They are sending their kids. कहाँ? नासा. जाओ नासा देख के आओ, नासा की म्यूजियम्स देख के आओ. उनके दिमाग में वो बैठेगा. The problem is this, that हम जिस प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, जिन स्टोरीज को हम पढ़ने वाले हैं, they are something that will cause, that will tell that how we have been. It's not slavery here doesn't mean, or the way we were being enslaved doesn't mean that we were being in chains. No, we were not in chains physically. There must be something that 5-10,000 British were ruling over millions of people and no one raised a voice for ages. क्योंकि गुलाम उन्होंने जंजीरें बांध के नहीं बनाया था. They were not tied in chains. They have created, जिसको मतलब ना जहनी तौर पे गुलाम बना लिया था, दिमाग को गुलाम बनाया होता. आज भी है. Yes, आज भी आप कहीं ना कहीं उसी जहनी गुलामी के जो है शिकार हैं. So this is how you have to understand that. अच्छा, अब सर ये इंडिया में कैसे चेंज आया? हाँ, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, we are going to talk about the ways and the events and the let's say the action and the reaction which brought to us where we are today. So today when we talk about what is India is a sovereign socialist secular democratic republic. How we have arrived to this, especially in the past 2 or 3 centuries. So basically the purpose of understanding history starting from ancient, let's say, is that you have to understand that आप आज जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचे कैसे. तभी सही मायने में आप हिस्ट्री को समझ पाओगे, तभी उसका पर्पस तभी फिल होगा. There are 2 ways to teach this part which I am teaching. That is, one is I start with telling facts and done. You have booklets with you, if I'm not wrong. फैक्ट से फुल है. मैं कोई ऐसा नया फैक्ट नहीं बताने वाला आपको. अब मेरी हिस्ट्री की पढ़ाई में 1857 का रिवोल्ट 1857 में ही होगा, वो 56 या 58 में नहीं होगा. लेकिन हाँ, what we are going to understand is how to connect that so that we can score
that 1 mark extra in our answer. This is our target. My target is not to teach you history, to be very honest. आप में से हो सकता है किसी को डेट्स मुझसे ज़्यादा अच्छी रटी हुई हो, पॉसिबल है, जस्ट एवरी ह्यूमन हैज़ his or her own capabilities, that's true, but it is not about dates. It is all about understanding that all chain of events that brought us here where we are today. Or let's say, if we talk about modern history, it will end at independence. So how first we got colonized and how we got independence from that. So what were the reasons of India getting colonized? Bigger question. Who colonized? That's a different story. But why? What happened? So if you see the British came, the Europeans came before the Mughals. Yes. Vasco da Gama arrived when? 1498. Babur came when? 1526. Who came first? Portuguese. So Portuguese were the first one to come and the last one to go. Itna dhyan rakhna bas. So we'll start with the first part. The first chapter in this, and that is Advent of Europeans. Sorry, just 1 minute. (1453) is a very significant year in the history of the world, not in India. 1453 is a very significant year in the history of the world. What happened? Fall of Consolidation. Very good. Fall of and this we have seen in our world history part as well, that this was what? The fall of Constantinople. The fall of Constantinople. Now, what was this fall of Constantinople? Constantinople is modern day Istanbul. Constantinople is modern day Istanbul. अच्छा, Istanbul में क्या हुआ? It was the Byzantine Empire which was ruling, and the Ottomans जो है वो उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया, यानी कि तुर्की के ऊपर या जो सेंट्रल एशिया का रीजन था उसके ऊपर अब किसका कंट्रोल आया? उसके ऊपर कंट्रोल आया मुस्लिम्स का. Okay, one thing. This was the time when the Turkish, they were ruling all over. So Mughals were also of Turkish origin. You will see. This point of time pe it was the Lodi dynasty which was ruling. 1451, the Lodi dynasty will come, and it was of Afghan origin. Okay, but prior to that, all the 4 dynasties were of Turkish origin. So Turkish यहाँ dominate कर रहे थे, और मुगल आएंगे वो भी Turkish lineage से ही आएंगे. Okay. देन द सल्जूक्स वो भी टर्किश थे, ऑटोमन्स ये भी टर्किश थे. तो इस पूरे बेल्ट पे जो है वो किसका रूल चल रहा था? टर्किश. व्हाट दे वांटेड टू कंट्रोल वाज ट्रेड रूट. अब और यही वो दौर था जब यूरोप में हमने देखा दैट द रेनेसां पीरियड वाज देयर, इट वाज द एज ऑफ अवेकनिंग, और रेनेसां व्हाट वी कॉल एज द एज ऑफ डिस्कवरी एंड क्वेश्चनिंग. तो जब यूरोप के अंदर यूरोप को दिखा कि क्या हुआ, दैट द सी रूट द लैंड रूट, ऐसा नहीं उससे पहले यूरोपियंस इंडिया नहीं आ रहे थे या यूरोप के साथ इंडिया का ट्रेड नहीं चल रहा था, बट मिड ऑफ 15th सेंचुरी ये हुआ कि अब उनको ज़रूरत पड़ी एक नए ट्रेड रूट की, उनको ज़रूरत पड़ी एक नए जगह की जहाँ से वो क्या कर सकते हैं, जहाँ से वो ट्रेड कर सकते हैं. खैर, इसका प्रोसेस शुरू किया क्योंकि अब जो पूरा सेंट्रल, अब
अनदर सी रूट ट्रेड वॉज इंडिया टू अरब एंड फ्रॉम अरब टू यूरोप. एक रूट ये था विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स. दूसरा रूट कौन सा था? दिस द लैंड रूट, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए, सेंट्रल एशिया से तुर्की से यूरोप. ये भी अब किसके कंट्रोल में आ गया? मुस्लिम्स के कंट्रोल में आ गया. व्हाट टू डू नाउ? सो इन 1494 यूरोपियंस परेशान थे. एक कोशिश क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी करी 1492 में, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल. 1487 में जो पोर्चुगीज प्रिंस था, प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल, उसने जो है ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेविगेटर. मतलब उसने बहुत ज़्यादा जो है पैसा और रिसोर्सेज खर्च किए इन ऑर्डर टू सर्च न्यू सी रूट टू इंडिया, बिकॉज दे वॉन्टेड टू कंट्रोल द ट्रेड. सिंपल. सारी कहानी वॉज अबाउट हु विल कंट्रोल द ट्रेड, हु विल कंट्रोल द रॉ मटेरियल्स. सो प्रिंस हेनरी ने जो है बहुत ज़्यादा वो किया. एंड 1487 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज बीइंग मेड, बट इससे कुछ काम बना नहीं, बिकॉज द सी रूट टू इंडिया वॉज नॉट डिस्कवर्ड. 1487 there was a Portuguese. His name was बार्थोलोम्यू डियाज. 1487 में एक पोर्चुगीज था, हिज नेम वॉज बार्थोलोम्यू डियाज. इसने अटेम्प्ट किया इन ऑर्डर टू सर्च सी रूट टू इंडिया, बट ही कुड रीच ओनली टू केप ऑफ गुड होप. वो अफ्रीका की सदर्न टिप तक तो चला गया, उसके बाद की कहानी उसको नहीं पता थी, वॉज नॉट नोइंग, और ये वहाँ से वापस आया. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूट वॉज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज हाउ टू रीच केप ऑफ गुड होप फ्रॉम देयर, फ्रॉम पोर्चुगल और फ्रॉम यूरोपियन कोस्ट. अच्छा, अनदर अटेम्प्ट was made in 1492, and this attempt was made by Christopher Columbus. This attempt was made by Christopher Columbus. लेकिन वो भाई साहब हिंदुस्तान तो पहुंचे नहीं, वो पहुंच गए कहाँ? कैरेबियन आइलैंड्स. he never reached mainland America, he reached Caribbean islands. और उसके बाद एक नया, अच्छा उसके बाद एक पूरी नई दुनिया मिल गई. That is why it was called as a new world. Because the world was the world at that point of time, before this time, world का मतलब था यूरोप, एशिया, अफ्रीका. वो भी अफ्रीका का आउटर कोस्ट, इनर कोस्ट तो जानते भी नहीं थे. मतलब हिंटरलैंड अफ्रीका के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था. सिर्फ उन्हें क्या पता था? इज अ कोस्ट लाइन. खैर, दैट इज वाई द अमेरिकाज वर डिस्कवर्ड. अब अमेरिकाज वर डिस्कवर्ड तो लगा कि यार कुछ करना चाहिए. इनके दिमाग में कुछ आया, और उस टाइम जो है पोर्चुगल और स्पेन दोनों के बीच एक ट्रीटी हुई 1494. That is known as Treaty of Tordesillas. That is known as Treaty of Tordesillas. इन्होंने क्या किया इस ट्रीटी के तहत? दे ड्रू एन इमेजिनरी लाइन. They drew an imaginary line in the Atlantic. They took out the map and so world map, let's say this is North America, this is South America, this is Europe, this is your Africa, this is Asia. So ये South America जो है ठीक है. So they draw a line which was something like this. They drew an imaginary line somewhere like around this. So basically it was 1300 miles west of the Cape Verde Islands. So यहाँ से एक उन्होंने एक imaginary line draw करी. स्पेन ने ये कहा दुनिया का ये हिस्सा मेरा और इधर का हिस्सा पोर्चुगल का. आपस में दुनिया बैठ ली, बैठे बैठे ये दोनों जगह के राजा मिले. अच्छा, पर्पस क्या था? टू कॉलोनाइज द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड. क्रिश्चियन वर्ल्ड तो उनके कंट्रोल में था, लेकिन टू कॉलोनाइज दी, टू गेट कंट्रोल ऑफ द
नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, एंड दैट इज द रीजन कि अब इस तरफ का सारा किसके पास आया। आप समझ में आया स्पेनिश क्यों बोली जाती है इतनी? अब समझ में आया क्योंकि ब्राजील इज ऑन दैट साइड ऑफ दैट लाइन, से ब्राजील में पोर्चुगीज बोली जाती है। दिस वॉज बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी 1494। इसीलिए स्पेनिश हमारी तरफ नहीं आए कभी। और ऐसा नहीं था कि स्पेनिश दे वर नॉट कॉलोनाइजर्स, दे वर ऑल्सो कॉलोनाइजर्स, बट बाउंडेड बाय दिस ट्रीटी। So this side all Spain. So that's why you see Bolivia, you see Mexico, you see Argentina, all of the Central Latin America and South America. Mostly it is what? Spanish. Some part Brazil is what? Portuguese, because of this reason, because of this treaty. And that is why it was now India became on the side of Portuguese. That now it is the responsibility, or let's say it is on as per this treaty they will do. So according to this pact, Portugal could claim any and occupy anything east of this line. East of this line, Portuguese. So they could claim, capture anything they want. West of this line, it was all Spain, and that is why we saw Portuguese intrusions into Indian Ocean. अब दुनिया के नए हिस्से मिल गए, सब पे तो सब कब्जा नहीं कर सकते, आओ बांट लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बैठे बैठे दुनिया को बांटा। खैर, हाँ अपनी अपनी कैपेसिटी थी ना, क्योंकि स्पेन को क्यों कम मिला? ये तो स्पेन समझदार था, यहाँ कोई कंटेंडर नहीं था ना, ये तो अभी अभी मिला है, तो नया हिस्सा इसने ले लिया, ये तो अभी अभी मिला था, रिसोर्स रिच ज्यादा ये था। और दूसरी चीज, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंडर थे ना, इंग्लैंड भी आएगा, फ्रांस भी आएगा, स्वीडन भी आएगा, डेनमार्क भी आएगा, नीदरलैंड भी आएगा, सब लोग आएंगे। दे वर स्मार्ट इनफ, उनकी जगह कम थी लेकिन उनका एरिया आप कह सकते हो कम था, बट इसीलिए एशिया की तरफ स्पेनिश इम्पैक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि वो उनका जोन था ही नहीं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। सो दे डिड दिस ट्रीटी। सो 10 years आफ्टर बार्थोलोम्यू डियाज, 1497, Vasco da Gama set on a journey to India, and in next 11 months, so वो भी Cape of Good Hope तक पहुंचा। And what happened that when they reached here, after that he was also knowing, then there was a Gujarati merchant, his name was Abdul Majid. So there was a Gujarati merchant जिसने Cape of Good Hope से लेके कैलिकट तक का जो कोस्ट लाइन था वहां तक पहुंचाने का काम उसने किया। सो दिस इज हाउ द न्यू सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड। नाउ व्हाई ही डिड दैट, बिकॉज ऐसा क्यों किया सर? सवाल योर फैक्चुअल जर्नी एंड्स हियर, दैट वास्को डी गामा followed the path of Bartholomew Diaz, reached Cape of Good Hope. After that he was being showed way by sea route by a Gujarati merchant, his name was Abdul Majid, and he brought him till the coast of कैलिकट। सवाल है क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंडिया में ट्रेड चल रहा था, जो सी रूट से जो ट्रेड हो रहा था, इट वाज ऑल डोमिनेटेड बाय अरब। सो अरब्स वर हैविंग अ मोनोपोली ओवर दिस, और ये जो है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एंड व्हाट हैपेंड दैट दिस became, मतलब एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हो that he wanted to end the monopoly of the Arabs over trade to India, because गुजरात या महाराष्ट्र ये जो हमारा इंडियन इधर अरेबियन सी वाला कोस्ट है, उससे ट्रेड सीधा कहाँ जाता था? अरब, अरेबियन पेनिनसुला के बाद क्या होता था? वहाँ से वो यूरोप निकल जाता था, मेडिटेरेनियन क्रॉस करता था, यूरोप निकल जाता था, सिंपल। सो दिस इज हाउ इट वाज डन। सो ये कौन सा टाइम था? ये वो टाइम था जब डेक्कन का जो रीजन था, इट वाज द बहामनी किंगडम व्हिच वाज डोमिनेटिंग डेक्कन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1498 दिल्ली सल्तनत इज वेरी वीक। 1498 में दिल्ली सल्तनत का मतलब वाज दिल्ली, पंजाब एंड रीजन्स ऑफ आगरा, सो नॉर्थ इंडिया। पूरे इंडिया के ऊपर
दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। क्या पूरे इंडिया पे दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल था? हाँ, व्हाई नॉट? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल टू डेक्कन। सो एब्सोल्यूट आज वाला तो खैर किसी के पास नहीं था। जो जितना आज हम जो यूनिफाइड इंडिया देख रहे हैं, आज का जो हम इंडिया देखते हैं, वो तो किसी के पास नहीं था, वो अंग्रेज़ों के पास भी नहीं था। फाइन, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रेच वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और वो फाइन, बट ग्रेजुअली जो है वो डिक्लाइन होता गया। और 1490s, मतलब हार्डली इट इज़ 26 ईयर्स फॉर द अराइवल ऑफ बाबर। सिकंदर शाह लोधी का जो है वो टाइम है दिल्ली में, एंड ये आते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब बाय द एंड ऑफ 15th century इट वाज द बहामनी किंगडम। बाय द एंड ऑफ 15th century इट वाज द बहामनी किंगडम, which was dominating the south or the Deccan region. Fine. So this was one aspect of this. खैर, वास्को डी गामा came 1498. कहाँ आया? कैलिकट आया. All that facts you know. Then he came for trade. At this point of time, they had no intention of colonizing. They had no intention, nothing like this. कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि यहाँ से यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे colonize करना है. They had nothing, no such plan. Then Vasco da Gama, from then till 1505, he made 2 journeys to India, and the profit that he earned in these journeys, in these voyages, was, net profit was 5 times of his journey. Net profit. So जो उसकी जर्नी का कॉस्ट होगा, जहाज को यहाँ से लाना और फिर सामान को यहाँ से ले जाना, that was how much? 5 times. So they were enormous profits. Why they were so much obsessed with India? Now the question comes. Why India? Why there was so much रेस लग गई, और ये भी ढूंढना है, ये भी ढूंढना है, इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ, कैसे भी करके कंट्रोल करो। पागलपन था। क्यों था? What resources? और कोल, गोल्ड में तो हम सरप्लस चल रहे थे। वो पहले ही आप देखोगे कि जो साउथ के राजा है ना, जब वो ट्रेड करना शुरू करेंगे तो वो गोल्ड बुलियंस में डील करेंगे। बोलेंगे ऐसा है कि हम जो है, तुम्हें जिसकी कमी है वो ले लो, हमें गोल्ड दे दो, हमें पैसा नहीं चाहिए, मतलब हम आपकी करेंसी में डील नहीं करेंगे। वो तो टेक्सटाइल, यस, कॉटन वाज इम्पॉर्टेंट। कॉटन, साउथ का सिल्क वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आइवरी ट्रेड हुआ था, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट they badly required was spices. What they badly required was spices. Why spices? सवाल तो अब ये आएंगे, why spices? होगी, मतलब यू आर नॉट श्योर, लेकिन खाना तो आज भी उनका फीका होता है। फिर किस लिए? तो ट्रेड कर, कोई तो कंज्यूम कर रहा होगा ना। अरब भी यूरोप में ले जाके बेच रहे थे, और यूरोप में खाना, यू नो दैट दे हैव फीका खाना। जरा सी मिर्ची बढ़ जाती है तो अंग्रेज लाल हो जाता है हिंदुस्तान में। One was medicinal, another was preservation. Because इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया नहीं था, फ्रीजिंग और प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स थी नहीं, या मशीन्स नहीं थी। दे हैव अ शॉर्टर समर सीजन, मतलब उनका कल्टीवेशन पीरियड भी क्या होगा? शॉर्ट। समर सीजन शॉर्ट है तो कल्टीवेशन पीरियड भी शॉर्ट हुआ, मतलब दे नीडेड स्पाइसेस टू प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो सब्जियां हैं, जो भी उनका, व्हाट इज पिकल? सच में, बट यू सी हाउ पिकल इज मेड। You want to have raw mango for the whole season, for the whole year.
What you're doing? You're not cooking it. You're not freezing it. What you're doing? So the spices were used as preservatives. And they had medicinal use as well. So medicinal और preservation का use था. खाना तो उनका आज भी फीका है. मीट को प्रिजर्व कर रहे थे बेसिकली. मीट को प्रिजर्व करने के लिए दे हैव देयर ओन टेक्निक्स. वो तो फ्रोजन जितना कर सकते थे बर्फ में वो करते थे. कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस है. अकेली कोई स्पाइस किसी काम की नहीं. और वरना एक काम करना, संडे को तुम यहाँ से जाना पुरानी दिल्ली, वहाँ जाना खारी बावली. एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार है वो वहाँ. हाँ, रिसर्च करना वहाँ पे. खारी बावली इधर नियर यू आर फ्रॉम विच प्लेस? साकेत. ओके, फ्रॉम दैट साइड. So Vasco da Gama came 1498 and it was King Zamorin who welcomed him. तो इसका वेलकम किसने किया? ज़ैमोरिन ने जो है इसका वेलकम किया और उसको कुछ मतलब वो भी दिया. So you can say that this discovery of a new sea route to India, was the extension. Now this can be a question. The discovery of new sea route to India was an extension of the European spirit of Renaissance. Discuss. अब बताओ, वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है कि मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है? The discovery of new sea route to India. The discovery of new sea route to India was the result of European spirit of Renaissance. Result of European spirit of Renaissance, or Renaissance as you say. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, where we are talking about Portuguese, everyone. That Portuguese were the first one to come and last one to go. Portuguese came 1498, they will go in 1961. 61. Goa का liberation 1961. We'll read about this in post-independence. But yes, ये point यहीं पे ध्यान रखना. कभी कभी इस तरीके के confusing statements आ जाते हैं that you fumble. So Portuguese were the first one to come and last one to go. Gradually what happened that after this all sea discovery and sea, 1503, the first Portuguese fort was built in Cochin. 1503, they constructed their first fort in Cochin. Second at Cananore. So Calicut में आए कहाँ थे? ज़ैमोरिन ने कहाँ वेलकम किया था? कैलिकट. 1503 में बनाया कहाँ? कोचिन में. और 1505 they built another port at Cananore. Fine. So now they have 3 sea here: Cochin, Calicut and Cananore. So now Portuguese, by 1505, Portuguese were present at 3 important places. Now they have built forts, and this was the time that gradually they started controlling this, and in 1505 first तो वहाँ का जो राजा था उसको लगा कि now this is the time that we should, उसको खबर लग गई that this is all a fragmented land. 1505 there is no central authority. Bahamani kingdom was also divided into what? 5 kingdoms: Ahmednagar, Berar, Golconda, Bidar. All they were all divided. Fine. So this is the time that we should gradually start our expanding
and we should gradually start building a stronghold in this region. We should gradually start building a stronghold in this system in this region. And in 1505, Francisco de Almeida, 1505 to 1509, he was the first Portuguese governor. 1505 to 1509, he was the first Portuguese governor in India. And what he is known for, Almeida, what he is known for, he is known for his blue water policy or cartage system. What he is known for? He is known for his blue water policy or cartage system. क्या था blue water policy? Turn the water blue. expansion of the rivalry state. Somewhat. He said we have two choices, either to establish a territorial empire in India, but he said that is, according to him, that was not something which was profitable. If you really want to have this, that we should dominate the sea. Instead of establishing a territorial empire in India, what we should do, we should dominate the sea, and once we will dominate the sea, we will dominate the trade. Fine. So blue water policy means that we should not go for territorial gains. We should only restrict our actions to gain commercial, to enhance our commercial activities. मतलब अपनी commercial activities को enhance करने के लिए, and we should not also focus on other things. We should only focus on spice trade. उन्होंने कहा देखो मोनोपोली स्टैब्लिश करते हैं, पूरा टाइम फोकस किस पे लगाते हैं? समंदर पे लगाते हैं. ये जो आप टेरिटोरियल गेन्स और इन चीज़ों की बात कर रहे हो, वी शुड नॉट फॉल इनटू दैट, एंड देन वी विल. अच्छा, द नेक्स्ट सेकेंड पोर्चुगीज गवर्नर फ्रॉम 1509 to 1515 was Alfonso de Albuquerque. (1509 to 1515), he was the second Portuguese governor. गवर्नर का उनके टाइम गवर्नर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश टर्म है. सो वी आर एडमिनिस्ट्रेटर, हर किसी ने अलग नाम दे रखा था. सो इवन हम तो मुगल में भी गवर्नर वर्ड यूज करेंगे. एक्सपेंशन, कंट्रोल ऑफ ऑल द ट्रेड एंड एवरीथिंग, ओवरऑल कंट्रोल जो पोर्चुगीज जो भी था वो इन्हीं के उसमें था. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, two things that you have to remember, that he is the real founder of Portuguese power in India. Who? Alfonso de Albuquerque. Number one, he is the real founder of Portuguese power in India. और आप कह सकते हो जो imperialism था, वो पोर्चुगीज इंपीरियलिज्म की शुरुआत इसके टाइम पे हुई 1510. टू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, जो सवाल आएगा. They captured Goa from after defeating the Sultan of Bijapur. They captured Goa. अब ये अभी तक देखो, ये सिर्फ अभी क्या था? Till this point, first 10 years roughly, what they did is, sir, can we build a fort here?
can we build a station here? They were doing what? They were taking permissions. They were doing what? They were taking permissions. But now, see, in 10 years, they are expanding. सीखो कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो करा जाता है. ज़रूरी नहीं जो आज आप कर रहे हो कल आप आज आपने स्टार्टअप शुरू किया और कल आप करोड़पति बन गए, नहीं होगा. और अगर आपके ड्रीम है तो आपका स्टार्टअप कभी सक्सेसफुल होगा भी नहीं. सच है. ग्रेजुअली पहले क्या किया? देवर हाउ दे एंटर्ड एज अ ट्रेडर, देन जैसे सर कैन एक छोटा सा बना लें, यहाँ पे ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी. बोले ठीक है बना लें. फिर एक और परमिशन ली, एक और बना लेते हैं. और फिर उनको लगा यार ये तो बिल्कुल फ्री है, मतलब विदाउट एनी डोमिनेशन, विदाउट एनीथिंग, दे आर डूइंग व्हाट दे वांट. तो उन्होंने बोला सर ऐसा है, अब हम कब्जा करेंगे. एंड दे गॉट गोवा. Very important Portuguese settlement because the ultimately the Portuguese will be thrown out of Goa in 1961. So Goa उनके कंट्रोल में रहेगा. गोवा उनके कंट्रोल में यहाँ से आता है. एंड जहाँ जहाँ a very important point, जहाँ जहाँ इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा, किनका? पोर्चुगीज का. इसके अल्बुकर्क के दौर में सो इट इज सती को लेके 3-4 नाम याद रखने. तो अकबर सती के ऊपर चेक लगाएगा. चेक ऐसा लगाएगा दैट अकबर के टाइम पे एक फरमान 1591-92 में एक फरमान जारी होगा जिसमें ये कहा जाएगा कि किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ सती नहीं किया जा सकता. मतलब दैट शुड बी वॉलंटरी. और बाल जो विधवा है उसका सती नहीं होगा. 2 फरमान निकले थे अकबर के दौर में. नंबर 1 दैट सती इज voluntary, no one can be forced to, no one can be burnt against her will, and say it like this. Second, that the child widows, they were, but what Portuguese did prior to that was they ensure that there is no such practice of sati. Not all over India, of course they were not having control over India. So whatever is their area of control, whatever is their area of influence, वहाँ पर the sati was banned. ये सवाल आ सकता है. This is a question. अभी तक किस तरीके का कुछ आया नहीं है. So I'm expecting something to come. अच्छा, next, the next governors were not that strong. He was succeeded. मतलब the next important Portuguese governor was the last one. Was Nino da Cunha. Yes, Nino da Cunha. And (1529) he became he was sent to India in 1529 and he was there till 1538. So 1529 38. 1529 to 1538. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, the headquarters of Portuguese operation in India was shifted from Cochin to Goa in 1530. So आप ये कह सकते हो kind of transfer of capital. So the center of headquarter or the headquarter of Portuguese activities in India was shifted from Cochin to Goa when? In 1530. So first important thing that you have to remember. 1534. सुनना, कहानी सुनना. मिडिवल में दोबारा आएगी लेकिन यहाँ भी सुनना. Humayun became the ruler in 15. Now Mughals have came 1526. Battle of Panipat, Mughals आ चुके हैं. Condition दिल्ली की अगर देखें. And 1530 Babur died. ये भी हो गया. 1530 Humayun became the Mughal emperor. Now Humayun was expanding and Mughals always wanted to have control over Gujarat. Why? Because of trade. क्योंकि दिल्ली से सबसे nearest seaport was at Gujarat. If you see, and without any obstacle, because आपको सिर्फ रेगिस्तान क्रॉस करना और आप सीधे you are at the sea coast. So what they wanted was to control over that seaport.
सो हुमायूं डिड अटैक गुजरात क्योंकि उसे कंट्रोल चाहिए था, नॉर्थ एरिया वो कंट्रोल कर चुका था. At that point of time, Gujarat was being ruled by Bahadur Shah. Gujarat was being ruled by Bahadur Shah. So Bahadur Shah of Gujarat. So Humayun defeated him. When we'll read about Humayun, we'll read that he was having one. उसके political expansion में एक flaw था कि वो consolidation की बजाय जो है वो फ्रैगमेंटेशन कर रहा था एम्पायर का, बिकॉज उसको डर था कि मेरे ही भाई जो हैं वो बगावत कर देंगे. तो जैसे ही वो कोई नया एरिया जीतता तो अपने किसी भाई को दे देता था ताकि वो उसे बगावत ना कर पाए. ही वाज हैविंग 3 brothers who were contending. सो हुमायूं के 6-7 बच्चे थे, उसमें से 3-4 लड़के जो थे बाबर के 4 लड़के जो थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंदल. ठीक है. तो ये जैसे ही गुजरात जीतता है, इंस्टेड कीपिंग हिज ओन होल्ड ही गेव इट टू कामरान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कामरान को वो देता है. बहादुर शाह इस मौके का फ़ायदा उठाता है और वो क्या करता है, कामरान पे अटैक करता है और उसको भगा के वापस अपना कंट्रोल गुजरात के ऊपर स्टैब्लिश कर लेता है. लेकिन ही न्यू दैट हुमायूं विल कम बैक. सो व्हाट ही डिड, ही नो दैट आई कैन नॉट अलोन, क्योंकि उस टाइम मुगल जो कैवलरी थी या मुगल जो आर्टिलरी थी वो बेस्ट थी. इट वॉज नॉट ईजी टू डिफीट देम. ये वो लोग थे जिन्होंने अपने पोर्चुगीज वो लोग थे जिन्होंने they have mounted guns on their ship. So they were the first one who bring this gun mounted ships. So he said, okay, this can happen. So what he did, he went to Nino da Kuna, who Bahadur Shah of Gujarat. He said that there's a probability that Humayun will come back and attack me. So I want your help. So ठीक है, help तो मिल जाएगी, but what I will get out of it? The Portuguese asked. उसने बोला ठीक है, we will give you some पोर्ट. सो द पोर्ट ऑफ बसीन, द पोर्ट ऑफ दीयू, दमन, ये पूरा बेल्ट बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने पोर्चुगीज को दिया. किसके बदले? दैट इफ हुमायूं विल कम एंड अटैक मी यू विल प्रोटेक्ट. हुमायूं कभी आया ही नहीं. रीजन, बिकॉज हुमायूं गॉट इन्वॉल्व इन द ईस्ट, शेरशाह के साथ उसकी लड़ाई और वो उधर इन्वॉल्व हो गया. ही नेवर केम बैक. सो ही नेवर केम बैक. इसको हमेशा डर बना रहा और ग्रेजुअली दिस होल Basin, Daman, Diu, this whole region became Portuguese settlement. So जो Diu की जब बात आती है या Basin की जब बात आती है, so it was the Portuguese, it was the ruler Bahadur Shah of Gujarat who gave them this. Fine. नीनू डा कुन्हा ने तो एक तरफ तो उसको ये मिल जाता है, and he also established himself in Bengal. वो वाला पोस्ट भी तो चाहिए था ना. अभी ये सारी कहानी कहाँ चल रही है? वेस्टर्न कोस्ट पे चल रही है. ईस्टर्न कोस्ट को भी तो कंट्रोल करना था. सो हुगली में ही स्टार्टेड, सो सॉरी, हुगली में ही स्टार्टेड मेकिंग द फर्स्ट वे इज नॉट डायरेक्टली एस्टैब्लिशिंग. इन हुगली ही स्टार्टेड प्लेसिंग सम पोर्चुगीज नेशनल्स कि तुम वहाँ जाके सेटल हो, फिर वी विल see what to do next. So the first step that he took was he started establishing, settling and sending people out. इतनी कहानी क्लियर हुई? Okay. I'll give you 2 facts and then I'll ask you a question. The first Europeans to come to India were the Portuguese. The first Europeans to come to India were Portuguese. When they came? 1498. Let's say 1498. The second Europeans that came to India were the British. They came in 1601. So yes, for the next 103 years, there was no European who could give a contest to Portuguese. Then also Portuguese could not establish themselves. Why? Or the question can be on है इंटरेस्टिंग बात कि ऑलमोस्ट फॉर अ सेंचुरी देयर वाज नो वन टू चैलेंज देम. ऑलमोस्ट फॉर अ सेंचुरी देयर वाज नो वन टू चैलेंज देम, बट देन ऑल्सो व्हाट हैपेंड, they could not. We know it was British who ruled, the British, we know everything, but क्यों ऐसा हुआ? एक्सपेंशन किसे नहीं करना था? We are saying that Portuguese don't wanted to expand.
Who will give this? Or Portuguese का सर political I'll tell you one more fact. Just 1 minute. If you see 15th and 16th century, if you see 15th and 16th century, the Portuguese and Spanish were way ahead of English and Dutch and French when it comes to colonization or when it comes to this. तो वो बहुत आगे थे इनसे, बावजूद उसके वो इंडिया के ऊपर वो कंट्रोल नहीं स्टैब्लिश कर पाए जो अंग्रेज कर गए. अब बताओ. political interference जो Portuguese का इतना नहीं था वो English का ज़्यादा हो गया. नहीं, who told you? इंग्लिश को सर कंट्रोल एक सेकंड. पोर्चुगीज वो तो आते से ही लड़ना शुरू कर दिया. बीजापुर के सुल्तान से अटैक कर लिया. यहाँ वो बहादुर शाह गुजरात के साथ पॉलिटिकल डील कर रहे थे. दे हैव लेटर ऑन दे विल अटैक जहांगीर एज वेल. दे विल ट्राई टू अटैक शाहजहां एज वेल. ऐसा नहीं है. दे हैड दैट इंटरफेरेंस. they didn't shift to the North India. They made the coast. नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट पॉइंट, एक तो जवाब तुम लोगों के सामने था, तुमने देख. स्पाइसेस के लिए आए. नहीं बेटा, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि पोर्चुगीज लैंड के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं थे, वो बस पोर्ट और सी पे थे. वो ठीक है, बट देन ऑल्सो दे डिक्लाइन. वो भी तो कंट्रोल नहीं कर पाए ना. It was not that the coastline of India was under the Portuguese control, the rest was under the British control. No, hardly that. Goa, Daman, Diu, Dadra, Nagar Haveli. What was beyond that? Nothing. नहीं, वो तो वो बात की वो एक अलग. ये see again, when you're writing an answer in these kind of things, in these kind of questions, the sequence and the priority also matters. If you will get, आप कुछ ऐसा पॉइंट लिख रहे हो जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैलिड है, पॉइंट गलत नहीं है आपका, लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. द सीक्वेंस इन विच यू आर राइटिंग, द फर्स्ट थिंग. सी, मैंने क्यों कहा कि मैंने आपको एक हिंट आगे दिया था. अरे नीनो डा कुन्हा से पहले भी कोई नहीं था. बाद में तो बाद में था, ऐसा नहीं है नहीं था. 1515 पे इसका टेन्योर खत्म हुआ. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर हम कब पढ़ते हैं? 1529. मतलब फॉर 15 years there was no, so you can say that the governors who succeeded Albuquerque, they were weak. First point, the governors who succeeded Albuquerque, they were weak. ये था अल्फांसो, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, वो आया था उसके बाद. नीनो डा कुन्हा के बाद 42 to 45 वो था. So first thing, that the governors who came after Albuquerque, they were weak and they could not consolidate the Portuguese Empire in India first. Second point is, on the question of religion, the Portuguese were fanatic and intolerant. On the question of religion, the Portuguese were fanatic and intolerant. As in, they always they used forced conversion to convert the indigenous people into Christianity. और उन्होंने अपने आप को, मतलब वो जो सती पे बैन लगाया, अच्छी चीज़ थी. आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कुछ गलत था. दैट वाज अ गुड थिंग. ऑफ कोर्स दैट वाज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस एंड इट शुड एंड. इट शुड हैव एंडेड अर्लियर एज वेल. बट they always portrayed Christianity with a superiority intent. They always presented Christianity with a superiority, कि हम superior हैं. They always treated the locals, the natives, with, they wanted to forcefully convert. Even though the banning of sati was a good practice indeed, but that was being seen as an interference in the religion. Means a point came when the Portuguese expansionist policy was being governed by religion. Again, I've told you the story earlier. What happened when religion and politics come together? Became the cause of decline.
At that point of time, you can say that religious tolerance was a norm in India. हम 15-16 सेंचुरी में नहीं कह सकते कि इंडिया में आपको कम्युनलिज्म 1900 या 20th सेंचुरी से पहले एज सच कम्युनलिज्म नहीं दिखेगा. देयर मस्ट बी छोटे बड़े एक दो इंसिडेंट डेफिनेटली होंगे, ऐसा नहीं है नहीं हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल ऐसा कोई कम्युनल इंसिडेंट आपको इंडिया में नहीं दिखेगा जैसा 20th सेंचुरी में दिखता है हमें. सो ओवरऑल किसी को कोई दिक्कत नहीं थी दूसरे रिलीजन से. दे ऑल वर लिविंग टुगेदर, दे ऑल वर हैविंग मील्स टुगेदर, लेट्स से. ऐसा नहीं है कि किसी ने वो नहीं किया. तो एक ऐसे जगह पे जहाँ पे व्हेन religious tolerance is a norm and what you're trying to impose is religious fanaticism, what will happen? You will not be accepted by the people. अंग्रेज क्यों अच्छा चलो I'll come the other way. क्या लगा अंग्रेज शुरू में क्यों कामयाब हो गए? अलायंस बनाने का कॉज क्या था? ठीक है, फेयर इनफ. और नहीं, बहुत करे उन्होंने. क्या बात कर दी? सी, तुम किसी का साथ क्यों दोगे? Either you love them, why you will be with someone, why you will support someone. Either you love them, they are your friends, family, right? Or you have some profit from them. कि इसकी मदद करने से कोई फायदा मिलेगा. ये जब एक्सपैंड कर रहे थे इन्होंने किसी इंडियन के फायदे के बारे में सोचा ही नहीं. ये सिर्फ सोच रहे थे वी विल मेक द मनी. लेकिन on the contrary, when you see British, their good thing was that they first develop a source or an ally who is interested in them. Why? Because मीर जाफर ने मदद की, उसे बंगाल का नवाब बना दिया. वो तो ठीक है, हटाया, वो तक आगे की कहानी है. बनाया, that is, see, the story is not मीर कासिम ने मदद की, उसको नवाब बना दिया. And you know what? They were so good in this. When you will search, I'll give you one example. When you will search the list of presidents of Pakistan, Skandar Mirza was the 4th president of Pakistan, was a direct descendant of Mir Jafar. तो वो उन फैमिली, ऐसा नहीं कि एक को करा. You see the whole Rajputana, they developed allies, but they ensure that they also earn some profit, they also earn some money when we are doing that. Portuguese ने ऐसा कुछ नहीं कहा. So you can write that the Portuguese administration was more focused on earning fortune from themselves rather than thinking about the. और ऐसा नहीं है, उन्होंने हमारे लिए भी किया. आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है इंटेंट गलत था, मैं मानता हूँ, लेकिन करा तो फिक्स्ड एसेट कुछ तो बना के गए ना वो. They have created something which you are using. Be it this whole New Delhi. Who built that? British. Many of the buildings, bungalows, they're all of that time. You're using it now. At that point of time, intent may have been different, I know. But they thought about people who were Indians. अच्छा, वो जो आप Spanish, क्या you're saying what? Brazilian. So what happened that Spain had, in the meanwhile, what happened in late 16th century, Spain occupied Portugal. And because Spain का interest किधर था? Remember Treaty of Tordesillas? वो उस तरफ था, तो Spain was least worried about India. जब Portuguese, वो जब बात कर रहे, they were more focused on Brazil. No, it became because Spain had occupied Portuguese. So उनका ज़्यादा ध्यान किस तरफ चला गया? उधर. Apart from that, they got twin challenges, on which they failed both. एक उन्हें चैलेंज मिला यूरोप से, when Spain, Britain and Holland and France
they were rising as the naval power. So their naval, that वो blue water policy and the cartage system और वो जो भी maritime domination की बात कर रहे थे, तो उसको external challenge मिलता है कहाँ से? यूरोप से. The other European powers, be it Britain, be it France, be it Holland and all these powers, they even, a point came and in the later part of the 16th century, 1550s, 1560s के आसपास, there was a series of attack that was jointly launched by French, British and Dutch on Spanish and Portuguese. तो gradually इनको कमज़ोर वहाँ से हो रहे थे. And if you see their time period, let's say up to 1605 and even later, till 1605 the Mughal Empire was rising. So Mughals were very strong till 1707. And if you see in the whole region, and if you see the Deccan, there was the rise of Marathas. So two very strong native power were rising at the same point of time, which did not allow them to expand territorially. अंग्रेज ऐसा नहीं, अंग्रेज आ गए थे, लेकिन उन्होंने 100 साल तो यही इंतजार किया कि कमजोर होंगे तब हम अपना काम शुरू करेंगे. You have to learn this. Learn from them. ब्रिटिश से बहुत कुछ सीख सकते हो. There is no harm in learning the art of sharpening a knife from a murderer without adopting the idea of murder from him. So unless and until you are not taking the intent of murder, you can learn the art of sharpening a knife from a murderer. He's good in that. Don't borrow the idea of murder. Fine. So 1580 Portugal was annexed by Spain, not 1560. 1580 Portugal was annexed by Spain. तो फिर उनका ध्यान 1580s के बाद से उधर चला गया. 1600 holds, so 1550s on 1560 onwards, that was the rise of Akbar as a very strong military, and Akbar and he got support of the Rajputs, and Akbar became very strong. Mughals became very strong. Deccan में already जो है Marathas rise होने लगे. उसके बाद जब आप देखेंगे शाहजहां का पीरियड आएगा तो शाहजहां will expand into Deccan, because when Shahjahan will be the Mughal emperor, Aurangzeb will be the governor of Deccan. तो वो नीचे expand करेगा. बाद में Aurangzeb has his own Deccan policy, and at the same time you will see the rise of Marathas. Fine. So this was, and gradually जब Dutch और English आना शुरू हुआ, क्योंकि French will came later. Initially it will be the Dutch and English who will come to India, and they gradually challenged the Portuguese. So this you can say is one of the reason. विजयनगर एम्पायर 1670s के आसपास कोलैप्स करना शुरू कर गया था. 1632 टू बी वेरी प्रिसाइज. तो बट इट वाज मराठास. उनसे ज़्यादा जो है वो मराठास राइज कर रहे थे ना. डिक्लाइनिंग एम्पायर को कभी नहीं गिना जाएगा. ऐसा नहीं वो प्रेजेंट नहीं थे, प्रेजेंट थे, लेकिन आप डिक्लाइनिंग एम्पायर को कभी नहीं गिनोगे. हमेशा द एम्पायर विच इज राइजिंग. सो मराठास वर राइजिंग. Tell me true or false. Just listen and tell me true or false. The Portuguese captured Goa in 1499. False. Good. Alfonso de Albuquerque captured Goa from Bijapur Sultanate. False. अच्छा, पहले वाले का ट्रू क्या होगा पहले तो वो बताओ मुझे. 1510. 1505. बीजापुर से जब ले आया हुआ 1510 में लिया. 1510. वरना तो अल्फोंसो डे की 1510 सेकंड वाली लाइन पूरी तो ट्रू है इसका स्टेटमेंट. हाँ, मैंने कब बोला फॉल्स है? तो वो कुछ भी बोले होता गलत, वो सिलेक्ट नहीं होगा. तुम भी वो प्रीलिम्स अपना बिगाड़ लेंगे, तुम भी बिगाड़ देना. Another thing important. Listen. Whenever a question comes and your first instinct says कि मैंने ये पढ़ा है, on that part मैंने ये पढ़ा था और ये, if I have read this is true, make it true. Chances that
50-50 नहीं है, यहाँ 80-20 का चांस है कि वो सही होगा। लेकिन अगर तुमने उसमें ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो 100% चांस है गलत हो जाएगा। So more and more straightforward you will be state, okay, I have learned Albuquerque captured Goa, मतलब Albuquerque captured Goa, खत्म। मुझे उसके बाद कुछ दिमाग नहीं लगाना। So when you are solving prelims, अच्छा हाँ मैं तो कुछ तुम लोगों को टास्क पास दे के गया था, करा कुछ? क्या करा? 2 क्वेश्चन लिखे 15 दिनों में। क्या टास्क दिया था? हाँ, उसको लिखना शुरू करना, करा? कितने? 4-5? गुड। और क्या टास्क दिया था? आइडेंटिफाई करके रखना, करा? आर्ट एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे? क्या? 5 टॉपिक बताओ आर्ट एंड कल्चर। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में क्या? वो तो मुझे भी पता है, 5 टॉपिक तो मैं भी बता दूंगा। उसके अंदर क्या है ये बताओ। बुद्धिज्म जैनिज्म, फिर थोड़ी देर में लिख देना पूरा आर्ट एंड कल्चर। उसके लिए PYQs को स्टडी करना पड़ता है। वो जो आप टॉपिक ढूंढने की बात कर रहे हो ना, उसके लिए PYQs को स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गिव यू वन थिंग, जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, द्रविड़ स्टाइल पढ़ा, नागरा स्टाइल पढ़ा, पिछले 5 साल में देखो क्या ज़्यादा पूछा है, किसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं? नागरा पूछ लिया तो द्रविड़ आने के ज़्यादा है, या वेसारा आने के ज़्यादा है। और थोड़ा सा देखोगे तो द्रविड़ नागरा ऑल्टरनेट चल रहा है। तो या तो जो नहीं, पिछले साल जो नहीं पूछा है उसके आने के चांसेस हैं, या वेसारा के आने के चांसेस हैं। दिस इज हाउ यू एनालाइज द क्वेश्चंस। समझ में आया? नहीं? ओके, सो पोर्चुगीज समझ में आया? एनी क्वेश्चन? सर एक चीज पूछनी थी आपसे। प्लीज। आपने बोला था कि जो यूरोपियंस थे पहले तो पोर्चुगीज आए थे, मींस इंडियन, सेकंड ब्रिटिशर्स थे या डच? सेकंड के लिए बहुत कुछ वो है, मतलब ऑल्दो इट वाज यू विल से, थ्योरीज भी निकली कि सेकंड को लेके डच थे पहले, बट वी कंसिडर कि किसकी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी। सो इट वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज फॉर्म्ड अर्लियर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द चार्टर on 31st December 1600 and the Dutch company was made in 1605. तो वो जो आना वाली चीज़ है ना, उसको लेके जो डिबेट है वो फिर इस पे आके सेटल होती है कि हम ये देख लेते हैं कि किसकी कंपनी को पहले जो है वो राइट्स मिले, या पहले जो है वो फॉर्म हुई। फाइन। हाँ प्लीज। So like English came, or 1612 में the English captured Surat from Portuguese. तो Portuguese were having control over Surat, English जीते। 1663 later on तो मालाबार कोस्ट पे जितने भी वो थे Portuguese, वो डच के कंट्रोल में आए। So Portuguese you can say that, but still I'll say that there is a significant impact of Portuguese who came to India. What is that?
लिख लो थोड़ा सा. अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की. What is the impact or significance of Portuguese coming to India? Note down. The arrival of Portuguese not only signaled the arrival of Portuguese not only signaled the arrival of European powers, not only signaled, क्या लिखा? The arrival of European powers. Signaled not only the arrival of European powers, signaled not only the arrival of European powers, but also the growth of maritime power. This was the first time, full stop. This was the first time a foreign power had arrived in India. This was the first time a foreign power had arrived in India by water. This is the first time a foreign power had arrived in India by water. By water. The Portuguese ships were armed with cannons. The Portuguese ships were armed with cannons. And this was the first step. And this was the first step towards securing a monopoly over commerce. This was the first step towards securing a monopoly over commerce by threatening or using force. By threatening or using force. Change the paragraph. Numerous churches were built under the Portuguese rule. Numerous churches were built under the Portuguese rule. They are famous for their woodwork. They are famous for their woodwork, sculptures, woodwork, sculptures, painted ceilings, painted ceilings. They popularized the use of lime mortar, lime mortar, lime mortar, पढ़ा होगा ना? Lime mortar and laterite stones, in construction. They also introduced several new crops in India. After full stop. They also introduced several new crops in India,
including potatoes, tomatoes, chilies, etc. Including potatoes, tomatoes, chilies, etc. चिली, ग्रीन चिली, हम ब्लैक पेपर वाले थे, हम ग्रीन चिली वाले नहीं थे ना. आलू इज 300 years old, 400 years old in India, इससे पुराना नहीं. Red chilies also they can हाँ. Yes. sugarcane is a spice based है ना. चिली, रेड चिली नहीं. हम स्पाइसेस की बात जब करते हैं तो हम जो गरम मसालों की बात कर रहे हैं उनकी कर रहे हैं. और आप पुरानी जितनी भी डिशेस देखोगे, खासतौर पर जो स्पाइसेस जिसमें यूज होते हैं, उसमें ग्रीन चिली कहीं है ही नहीं. ब्लैक पेपर यूज होता है, काली मिर्च यूज होती है. आलू, आलू को देख के शौक हो रहा है. yes, आलू इज हार्डली 400 years old in our country. कौन बाहर से आया? मीज जो है वो बाहर से है. आपका शुगर केन बाहर से आया है. We are known for wheat and rice. दाल तो हम आज भी बाहर से मंगा रहे हैं. We are a net importer in case of pulses. We are net importer in case of pulses. Okay. ऐसा नहीं कि सब मतलब कोई कभी आया कोई कभी आया, ऐसा नहीं, सब एक साथ आया. बट यस, जैगरी यूज होती थी. हाँ, शुगर केन कौन सा अभी इंट्रोड्यूस. मतलब इफ यू विल सी, ओरिजिन ऑफ दीज क्रॉप्स इज नॉट इन इंडिया. द सेंस ऑफ सेइंग दिस इज, ओरिजिन ऑफ दिस क्रॉप्स इज नॉट इन इंडिया. अच्छा, द नेक्स्ट, नो डाउट बिग पावर वॉज इंग्लिश, लेकिन हम इंग्लिश को एंड में पढ़ेंगे सो दैट अ कॉन्टिन्यूटी इज मेंटेन. आफ्टर पोर्चुगीज विल टॉक अबाउट द डच. Sorry, Dutch East India Company was founded in 1602. शायद 1605 कह दिया, तो 1602. In their language, in Dutch language, it was called as VOC, Verenigd Oost, Dutch East India Company. So the Dutch established their first factory at Masulipatam, Andhra Pradesh. Very important point. The Dutch established their first factory at Masulipatam, Andhra Pradesh. ठीक है. So they also had, लिख लो, ये पॉइंट लिख लो. Okay. And that is Verenigd. Then O is for, that's in Dutch, that's not in English, first of all. First thing, it was like, it was Verenigd Oost, Indian, and then campaign, as campaign, something like this. Not at all. VOC is the Dutch East India Company, just remember this. Verenigd Oost, Indonesian, Campaign, it's called. So Dutch में है वो, English में नहीं है. ठीक है. So the Dutch East India, for us it is the Dutch East India Company. So हाँ, हम क्या लिख रहे थे? They established their first factory at Masulipatam. अच्छा, they had created commercial terminals in Gujarat. इनके सेंटर्स लिखो. गुजरात में क्या क्या थे? सूरत, ब्रोच, हाँ जी,
बट वो जो कहते थे हम वही लिखेंगे. ब्रोच, कैम्बे, कैम्बे. कैम्बे इज Gulf of Khambat, Cambay, Ahmedabad and Surat. Surat लिख लिया था ना? अच्छा, हो गया. So Surat, Ahmedabad, Broach and Cambay in Bihar. In Gujarat, sorry. Cambay in Gujarat, yes. Cochin in Kerala. Cochin in Kerala. Chinsura in Bengal. Chinsura in Bengal. Patna and Agra. अच्छा, क्या हुआ फिर ये Dutch, this 1602 इनकी कंपनी established हुई, they started to expand and you can see that at major centers of this country they have established their trading post. Now, before we move on, a small remembering story that will help you to remember everything. Who were the first one? Let's say Portuguese, English, Dutch, Danish, French, Swedish भी थे, but very Italians, मतलब they are not significant. जो significant थे वो यही थे. Who won this race? So let's say, imagine that when Vasco da Gama discovered sea route to India, a race between European countries started in order that who will establish their monopoly over India. So the race was between these people. Who won this race? English, we know that. 3 Idiots में कहता ना, फर्स्ट आने के 2 ही तरीके हैं, या तो बहुत अच्छे से पढ़ लो या एग्जाम से एक रात पहले दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है. सो यहां पर भी इन्होंने भी यही किया, इंग्लिश. दे वन दिस रेस, वी नो हाउ. लेट्स सी. Portuguese, though initially they were very important, but gradually they became significant, and a point came when English, they had a matrimonial alliance. And what happened? Prince Edwards, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली का प्रिंस था, उसकी शादी होती है प्रिंसेस कैथरीन से. उसकी शादी किससे होती है? प्रिंसेस कैथरीन से. और पोर्चुगीज रॉयल फैमिली सिटी ऑफ बॉम्बे दहेज में देती है प्रिंस एडवर्ड्स को, और ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिंस एडवर्ड्स से बॉम्बे को लीज पे लेता है 10 पाउंड साल पे. यस, 10 पाउंड्स पर ईयर. So Bombay was given as a dowry from the Portuguese royal family to the British royal family. It was not just, it was symbolic that now we are giving our claim over India. डाउरी सिस्टम पूरी दुनिया में होता है और वो कभी गलत नहीं था. हमारे कॉन्टेक्स्ट में आके या आज के कॉन्टेक्स्ट में उसे गलत बना दिया जाता है. डाउरी का कंसेप्ट जब कभी भी ह्यूमंस में शुरू हुआ होगा, इज दैट इट वाज नॉट द केस कि व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू हैव टू लिव विथ योर ओन फैमिली. Fine, you start a separate family, you 2 people, and because you are starting something new, you are getting married, so people used to give gift those things which are important to start a new home. वो गलत नहीं था, it was a social structure. I'm talking about ancient times. और उसको वेदास में कहा गया स्त्री धन. Groom have no claim over that. वो बात अलग है कि ग्रूम के पेरेंट्स जो है वो, लेकिन इन रियलिटी जब भी ये इसकी एज अ सोशल नॉर्म जब ये शुरू हुआ होगा, ये बुराई नहीं था.
और क्यों? क्योंकि अब उन दोनों लोगों ने उस घर में नहीं रहना है, दे हैव टू। और एक दौर ये होता था जब तक आप खुद का घर नहीं बना लेते थे तब तक यू कैन नॉट आस्क समवन फॉर अ मैरिज। कहते थे कि ठीक है, दिस इज माई पेरेंट्स हाउस, ये मेरा घर है, अब मैं यहाँ पे रहूँगा, नाउ आई एम केपेबल इनफ टू हैव माई ओन होम, देन आई कैन गेट मैरिड। तो वो घर खाली है, तो उसमें क्या होगा? उसमें फिर एज अ सिंबल ऑफ लव, एज अ जेस्चर ऑफ हैप्पीनेस, दिस वॉज बीइंग गिवन गिफ्ट्स या जो भी हाउस होल्ड। और फिर पेरेंट्स इसलिए देते थे कि क्या, माई डॉटर शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। मतलब वो इट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज अ बुराई। आज तो सोशल लेवल बन गया ना। अब ग्रेजुअली मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट दिखने लगा है कि अब पीपल आर नॉट आस्किंग फॉर दिस इनडायरेक्टली, लेकिन अब भी लोग मांग रहे हैं। अपनी खुशी से ले सके जो देना अपनी बेटी को दे दो। रियलिटी वही है कि वो बेटी का है। माता के तो छीन लेते और बेटी खुद की नहीं बेटी उसका सम्मान तो रहेगा। नहीं, आजकल के पता है क्या हो गया, जो एक मैं एक जनरल अगर इंडियन कल्चर की हम बात करें ना, सोशल कल्चर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, nowadays you will see that the girl is being flooded with gifts and these things. You know why? जितना ज़्यादा एक जो मैंने देखा कि एक नॉर्म सा ये बन गया है कि जितना बेटी की शादी में आप दोगे, आपकी बेटी को उतना सुख मिलेगा वहाँ पे, कि ससुराल वाले जो है ना वो उस पैसे के तले दबे रहेंगे। ये नॉर्म बन गया है, या ये एक माइंडसेट बन गया। हाँ, ये एक माइंडसेट बन गया है। तो माँ बाप को लगता है, and I'm telling you, because marriage is so difficult, adultery has become common. Today, if you want to marry someone, let's say, it should have been, मतलब social norm should have been so simple that you should have gone to your parents. At the end of the day, you have to get married ना, social norm है, करना है, जाओ कह दो हमें XYZ जो भी है। मगर क्या हो गया, उन चीज़ों को इतना डिफिकल्ट बना दिया गया दैट पीपल फील दैट ओके, डूइंग एडल्ट्री इज बेटर एंड ईजी एंड कन्वीनियंट देन टू गेट मैरिड। इसीलिए वो उसकी वजह से जो सोशल एविल दूसरे क्रिएट हो रहे हैं ना, नो वन इज वरीड अबाउट दैट। शादी करो उससे पहले सोचो कि खर्चा कितना होगा। मतलब दिल्ली जैसी जगह में तो और मुश्किल है। क्या बोलो बजट कितना भी बैठा लो कम ही होता है वो। इस बार अभी भाई की शादी थी मेरी 4th May। माय वेडिंग रिश्तेदारों ने बड़े जो है ऐसा भी हो वैसा भी हो ये भी हो वो भी हो। मैंने अम्मी से बोला, अम्मी आपको जो करना है करो, मैं अपने भाई की शादी में सिर्फ एक काम करूँगा। बोली क्या? मैंने मैं बस कोई एक ही चीज़ करना है, मुझे नहीं करना ज़्यादा। मैंने एक छोटा सा स्टिकर बनवाया, मैंने कहा गिफ्ट लिफाफे हमारे इधर मामेरा कहते हैं, ये वो लाना सख्त मना है, बंद नहीं चाहिए। क्योंकि तुम ला के दोगे फिर तुमको क्या लगता है कि तुमने हमको अगर 500 रुपये की चीज़ दी तो तुम हमसे 600 वसूल लो। आइए एंजॉय करिए, अच्छे से खाना खाइए और जाइए, क्योंकि आपने इसके बाद अगले 20 साल हमारे घर नहीं आना है। तो एक दिन आओ अच्छे से आओ, तुम्हारे गिफ्ट का मैं क्या ही कर लूँगा। My mother was like, and you know, actually that experiment worked. Many of the people, अच्छा अभी इतने रईस होगा हम इनके घर जाएंगे नहीं ना, आओ ही मत। तो भाई मुंह बनाना है मत आओ, 4 लोग आओ खुशी से आओ। कितने को बुलाओ? Like let's say my father, फिर मैं और फिर मेरा भाई, है ना, 3 लोग, those who are working and those who have good circles. But call them, invite them, those who are happy in your happiness. लिमिटेड लोग हो, अच्छे हों।
आफ्टर दैट एवरीवन वाज हैप्पी। और मैंने अम्मी से कहा ना, सबको एक गिफ्ट देना, आप दो, आपके बच्चे की वो है ना, लेने का क्या कंसेप्ट है। सो दिस आई चेंज्ड इन माय, बिकॉज अब हमारे टाइम अपनी शादी में तो बोल नहीं सकते ना। हाँ, तो तब तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन इस बार मैंने जो है ठीक है। हाँ, बट वी नीड टू ब्रेक सर्टेन सोशल नॉर्म्स, एटलीस्ट ग्रेजुअली होगा आने वाली जन, लाइक व्हेन माय वाइफ आस्क्ड बाय सर इज दिस फॉर, एंड माय वाइफ वाज, इसकी शादी में तो मैं और कम लोगों को बुलाऊंगी। मैंने हाँ ये ठीक है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये चीज़ें कम होंगी। कम लोगों को बुलाने वाला कल्चर कोविड के बाद से आ गया है काफी अच्छे से। और अच्छी चीज़ है वो। पहले जहाँ 1000 पीपल्स आते थे, अब हो गया 500 से भी कम हो गए, यहाँ 53%। सब समझ में आया ना, कौन अपना है कौन पराया है, कोविड ने बता दिया। वो भी बड़ा मजा आ गया। नहीं सर, फ्री का खाना खाने सब आ रहा है। नहीं यार, सबसे अच्छी शादियाँ हुई भी कोविड में। डायरी सिस्टम सबसे बढ़िया चलन है। 500 आपके घर पे गए, आपको 501 या 502 देना है। वो डायरी हमारे यहाँ भी है, वो डायरी हर घर में होती है, हमारे यहाँ भी है। अभी वो हुआ ये कि वो सम फंक्शन फॉर माय सन, तो वो बच्चे का था, तो खैर वो तो मुझे शादी में स्पेसिफिकली कुछ लोगों को नहीं अब बुलाना था और इरिटेट करना था, तो मैंने बोला ये ना ही है, अच्छा है, तो उनके लिए करा। बट अब बच्चे का फंक्शन था, तो वो एवरीवन सेंड समथिंग। फिर मैंने इतनी बड़ी डायरी बनाई, छोटी सी इतनी बड़ी, उसमें सारी चीज़ें लिख के रखी हैं, और एक फ़ोटो मैंने अपने घर पे दे रखा है, बस भोपाल में रहता ना, कभी आपको इनके यहाँ से किसी से दावत आए तो ये देख लेना किसने क्या दिया था। बट दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। द बैड थिंग इज व्हेन यू पुट अ बर्डन ओवर द गर्ल्स फैमिली। तो लड़की दे रहा है, और क्या चाहिए। क्यों बता रहा है सारी नहीं भी दे, मतलब इतनी डिमांड उसके सामने से, बट जो लड़की की फैमिली होती है वो भी अच्छे से दे। उसके रीज़न मैंने बताया ना आपको। सर ठीक है कि मस्त घर बना करके वो खुशी में आके इन्हें भी दे दो, इन्हें भी दे दो, इन्हें भी दे दो। वो बेटा उनकी गलती नहीं है, वो समाज का नियम, ये समाज की कुछ ऐसी प्रथाएं बन गई हैं जो कि अगर आपको वो इसलिए नहीं दे रहे हैं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स हैं, लड़की के पेरेंट्स हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको दो चीज़ें हैं कि हम ज़्यादा दे देंगे ना तो हमारी बेटी कम से कम ये तो बता पाएगी इतना लेके आई हूँ तो थोड़ा इज्जत से रहेगी। तब भी इज्जत करते सर। नहीं करते सर, मैं एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता है। बहुत पर्सनल हो रहा है। मुझे पता है सर, नहीं करता तब भी कहता लेके ही क्या आई थी तू। वो तो रहता है बेटा, वो क्या कर सकते हैं, छोड़ो खैर। सही, हम शादी में थे टॉकिंग अबाउट द मैट्रिमोनियल अलायंस, एंड ये भाई साहब ने डाउरी की बात करी और पानी लेने बाहर चले गए। स्मार्ट। खैर, सो द सिटी ऑफ बॉम्बे was not city of Bombay, rather it was a claim that now we are not going to expand over India। और फिर जब लड़के वाले होंगे तो लड़के वालों से कौन ही जो है, पोर्चुगल, इंग्लैंड, तो अब एक्सपेंशन का कोई सीन नहीं था। पोर्चुगीज वर एलिमिनेटेड एज अ कॉम्पिटिटर फॉर इंग्लिश। अच्छा, डच विल, लाइक देयर वाज एंग्लो डच राइवलरी। ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में आके इंग्लैंड या ब्रिटिश और डच के बीच there was a battle which was going on, there was a rivalry which went. Of course, who will establish their domination over trade, this was the question. Who will establish their domination over trade, this was the question. But they fought for years, and in 1667 they reached an agreement. 1667 डच और इंग्लिश के बीच इंग्लिश ने क्या किया, डच के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया in 1667. They said, ऐसा देखो लड़ वड़ के कोई फायदा है नहीं। On that side there is Indonesia, Malaysia and that belt. You take care of that. We will support your trade in Indonesia, but we will not interfere in that. We will trade in India. You support our trade in India, but don't interfere. डच को भी लगा यार लड़के क्या ही फायदा होगा. So what they had a trade deal. They had a trade deal. So Dutch was looking for what? Dutch says that yes, we will. They agreed to focus on Indonesian trade. So डच कहाँ का ट्रेड करेंगे, इंडिया का ट्रेड करेंगे, इंग्लिश कहाँ करेंगे, डच इंडोनेशिया का ट्रेड करेंगे, इंग्लिश इंडिया का ट्रेड करेंगे। तुम हमारे ट्रेड में इंटरफेयर मत करना, हम तुम्हारे ट्रेड में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सीधी सीधी डील हो गई और ग्रेजुअली डच जो है वो इंडिया से वाइप आउट
धीरे धीरे जाने लगे। अच्छा, फिर जो इनके नेक्स्ट बड़े कॉम्पिटिटर थे, एक्चुअली द लास्ट वन वाज 1664 में आके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। और अच्छा, मान लो तुम दोनों साथ में बैठे हो, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? अरे बिजनौर, हाँ हरियाणा, ले यूपी हरियाणा साथ बैठे हो। इन दोनों को तुम्हें पता चल जाए कि इनके दादा और तुम्हारे दादा में दुश्मनी थी, अभी अभी मतलब मैसेज आ जाए, घर से आ जाए, जिसके साथ तूने फोटो डाल रखा ना, उसके दादा की तेरे दादा की दुश्मनी थी, व्हाट विल यू डू? थोड़ा तो टेंशन आएगा ना, आएगा। और ये मत बोलना सर नहीं आएगा, मानसिक तनाव तो आ ही जाएगा। कुछ भी करा था, कॉन्फ्लिक्ट था। तो जो कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारा अपने घरों पे था वो यहां दिखने लगेगा, होगा। सेम वे द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर टॉम एंड जेरी ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। दे हैव ऑलवेज बीन फाइटिंग विद ईच अदर, दे डोंट लाइक ईच अदर। 2012 में अगर लंदन ओलंपिक्स था तो हमें पेरिस ओलंपिक्स उससे अच्छा करना है। दे ऑलवेज हैज दैट कल्चरल राइवलरी विथ ईच अदर, जहां वो ये हमेशा बताते रहते हैं, फ्रेंच कहते हैं फ्रेंच अच्छा है, इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश अच्छा है। एंड दिस यू विल सी, आप फ्रांस में अंग्रेजी बोल के देखो, पता चलेगा। They don't like it. So of course, if they were having a rivalry over there, do you think that they would have created something? इनमें से कुछ भी एक possible था, ये possible था, दुश्मनी है तो शादी काज हो जाएगी, ये ट्रेड डील possible थी। So both a point came when both of them wanted to have a trade deal. They wanted to have a trade domination over India. Both of them wanted to have trade superiority over India, but they had no point on which they can settle, and this led to the emergence of this led to the occurrence of Carnatic Wars. This led to the occurrence of Carnatic Wars in India. So what is Carnatic Wars? Carnatic Wars is the Anglo-French rivalry in India in 18th century. We'll talk about this later, but before let's understand ये French और English आए कहाँ से? Fine. ये French और English आए कहाँ से? समझ में आया? अच्छा, 1616 द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये हुई, एंड ग्रेजुअली इनके बारे में बस एक पैराग्राफ लिख लो, विच इज द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, the Danish East India Company created in 1616 established 1616, opened a factory in Tranquebar, on the boat near Tanjore in 1620. Tanjore 1620. Sirampur near Calcutta, was their main settlement. Sirampur and Calcutta was their main settlement. In 1845, Danish industries was sold to British government. Danish industries in India were sold to British
government the Danish are better recognized. The Danish are better recognized for their missionary work, than for their commercial endeavors. अब बात करते हैं फ्रेंच की, फिर बात करेंगे इंग्लिश की और फिर बात करेंगे कर्नाटक वॉर्स की। अच्छा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंड इन द ईयर 1664। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, किंग लुई द 14th, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, किंग लुई द 16th का टाइम था, ये किंग लुई द 14th का टाइम था जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनी। ठीक है। सो द फर्स्ट फैक्ट्री, फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड सूरत 1668। आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ एक लिस्ट इसमें तैयार कर लेना जो यहां से अब पॉसिबल क्वेश्चन दिख रहा है, दैट यूरोपियन पावर एंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, किसकी कहाँ थी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। So Francis Caron was the one who established the French factory at Surat, 1668. On that coast it was Masulipatam 1669. On eastern coast it was Masulipatam 1669. अच्छा, जगह वही थी, मतलब दे कैन बी मल्टीपल, तो ये ट्रेड सेंटर्स के तौर पे डेवलप हो रहे थे, दे वर ऑल डेवलपिंग एज ट्रेड सेंटर्स। फाइन, मसूलीपट्टनम, सूरत, आगरा, पटना, सीरमपुर। अभी देखो कलकत्ता एग्जिस्टेंस में नहीं आया, कलकत्ता विल कम लेटर ऑन। फाइन, इन द सेम वे मद्रास विल आल्सो कम लेटर ऑन। सो व्हाट हैपेंड, मसूलीपट्टनम का जो गवर्नर था, मसूलीपट्टनम 1669, 1673 में शेर खान लोधी, who was a administrator of that region under the बीजापुर सुल्तान, so this was under बीजापुर सुल्तान, which place मसूलीपट्टनम। उसको 1673 में एक छोटी सी जमीन मिलती है, who this फ्रैंकोय मार्टिन, फ्रैंकोय मार्टिन जो है फ्रेंच था, उसको एक जमीन मिलती है, कहाँ से, बीजापुर सुल्तान से, और उसी जमीन पे वो डेवलप क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं Pondicherry, which will become their, you know, the nerve center of French in India will be Pondicherry। जैसे एक टाइम पे कैलकाटा हो जाएगा इंग्लिश के लिए, वैसे फ्रेंच के लिए एक टाइम पे जैसे गोवा इज फॉर पोर्चुगीज, सो Pondicherry will become a French center। Pondicherry will become a French center, and this came to them in 1674। 1673 उसको जमीन मिली, 1674 Pondicherry, and apart from that they had their commercial centers, who French at Pondicherry तो था, तीन तो हमने लिख लिए, कौन कौन सा, सूरत, मसूलीपट्टनम, then Pondicherry। apart from that माहे, कराईकल, यानम, बालासोर इन उड़ीसा, एंड कासिम बाजार इन कैलकाटा। चंदन नगर भी था, अब आगे चल के आएगा, बट मेजर सेंटर्स यही थे। Yanam, so the UT of Pondicherry, Yanam, Karaikal, Mahe, these were all French settlements। Pondicherry देखा होगा ना, एक तो एक जगह नहीं है, स्कैटर्ड है, और कौन क्या है, Pondicherry, Karaikal, Yanam, Mahe,
ये सारे जो प्लेसेस हैं ये क्या है, ये उस टाइम पे फ्रेंच ऑक्यूपेंसी थी। ये 1951 में हमें मिले, ये उनके साथ नहीं मिले थे, ये 1951 में इंडिया का पार्ट बने। ओके, सो मेजरली फ्रेंच वर हियर। देन कम्स द राइज ऑफ इंग्लिश, राइज ऑफ इंग्लिश। 1599 में कंपनी बनी, 1599 में एक कंपनी बनी फॉर द ट्रेड and it was called as the Merchant Adventurers. 1599 में कंपनी बनी and that was called as the Merchant Adventurers. और क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने इसको 31 दिसंबर 1600 को, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर दिया which granted them a monopoly of trade over India, over the East. Which granted them the company Merchant Adventurers को एक रॉयल फरमान मिला, रॉयल चार्टर मिला, which says that now they have a monopoly over East. और इसीलिए कहलाया ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ब्रिटेन में, what is the significance of this monopoly? ब्रिटेन में जो भी ट्रेड ईस्ट की तरफ से आएगा वो पहले उसको कौन करेगा, वो ये कंपनी करेगी। आगे किसी को करना है वो इनके साथ ट्रेड करेगा, वो वहां जाके हम उसको परमिशन, इंग्लैंड का सारा ट्रेड इस तरफ का कौन देखेगा, EIC देखेगी। दिस इज हाउ EIC केम इनटू एग्जिस्टेंस, दिस इज हाउ EIC केम इनटू एग्जिस्टेंस। Then came the year 1609. Who? जोर से, जोर से, कोई बात नहीं, गलती की सजा थोड़ी है। हुमायूं नहीं था, औरंगजेब भी नहीं था। Who came first? अबे यार, शाहजहां 1627 में आए। 1605 अकबर डाइड। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये बंदा जो है, his name was William Hawkins. He reached to the court of Jahangir to seek permission to establish factory. There were two things. Number one, Jahangir was under Portuguese pressure at that time because Portuguese were very well established in compared to English. So somehow they managed to get into the English code, the Mughal code, and they were very much confirmed that. So when 1609, when William Hawkins went, he was the employee of the company, and he was being denied. He was denied for two reasons. Of course, number one is the Portuguese pressure that the Jahangir had over him, because of course Portuguese never wanted that someone from some other European country should have that access to trade that we are having right now. Secondly, and this is my personal analysis, I said that okay, he was who is like today someone from, like, if someone from Reliance has to meet Mr. Modi, the Prime Minister, who will be that person? Of course, the owner of the company. Or he will send his some junior level or middle level manager, go and meet Mr. Prime Minister. Prime Minister भगा देगा, PM ही परमिशन नहीं देगा कि who is he to meet. मिलना है तो खुद आके मिलो. You are meeting the Prime Minister of this country. Am I right? Same way, I feel that Jahangir ने भगा दिया होगा. बोले who the hell are you? Neither you are the owner of the company, you are just an employee of the company, and you are like, I'll tell you when we'll talk about the Mansabdari system. Okay, Mansabdari system was a military administration system that will be brought in the Mughal in Mughal administration, and that will be brought by Akbar. And Mansabdari system was the highest paid services in the world at that point of time. Now Mughals will say what? See whom we have employed. We have the highest paid employees of the world. And you, who are you to come in? So I believe that he was being denied. Then in 1612, Sir Thomas Roe. Now, there's a difference.
So this was in 1609. 1612. So Thomas Roe. 1612, Sir Thomas Roe. Now he came as the ambassador of King James. अब हाँ बात करेंगे because Prime Minister can meet the ambassador. Now see the difference. See the difference. First, who was being denied? A company emperor. But now, Sir Thomas Roe came as the ambassador of the king. Yes, now he will say we can talk because a king has sent an ambassador to the other king. Let's talk. What is the message? Because it is a set norm in the world that ambassadors are received with honors. Or not today, it is from ancient times. That ambassador, and it is considered an act of war if you will kill someone's ambassador. इसीलिए जैसे ही किसी कंट्री में अनरेस्ट होता है, किसी जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान, सबसे पहला ऑर्डर आता है एम्बेसडर लीव द कंट्री, क्योंकि बाई चांस उनके साथ कुछ हो गया. That will take another way. That is why diplomatic immunity and all these things are being given because ambassadors are always received. जैसे what is that? अरे WikiLeaks वाला. What is his name? Julian Assange. Search him. So he was hiding where? He was hiding inside an embassy. You cannot even send your police inside the embassy. That will be considered an act of war. Aggression माना जाता है. तो कभी किसी एम्बेसडर के साथ मतलब कहा यही जाता है कि एम्बेसडर, there are instances world history में जहाँ ऐसा हुआ and that is considered as an act of war. So 1612 Jahangir gave permission. Later on 1615 he came. Sir Thomas Roe. 1612 में सूरत की परमिशन मिली, बाद में दी इसने. 1615 Sir Thomas Roe came as the envoy of King James I, and he was able to secure a farman from Jahangir. Sir Thomas Roe का achievement क्या था? That he was able to secure a farman from Jahangir through which now they can establish and settle at in various regions of India. So thereafter, by 1619, they established factory at Agra, Ahmedabad, Baroda, and Bharuch. 1619, English had their factories at Agra, Ahmedabad, Baroda, and Bharuch. This is 1619. Within 4 years, they developed their next. Acha, this Bharuch and Baroda. Bharuch and Baroda. Acha. Their first factory in south was Masulipatam. क्योंकि अभी तो सूरत अहमदाबाद मतलब ये नॉर्थ की तरफ ही थे. What is the north-south divide? I have told you. अच्छा नहीं बताया. Consider Narmada river as the threshold. Above Narmada, it is north. Then Narmada to Godavari, it is, you can say, the Deccan region. Narmada to Godavari, and below Godavari, we call it South India, Dakshin. ठीक है. So Masulipatam. अच्छा. 1639. Francis Day. And on the other side, it was Raja of Chandragiri. Francis Day, राजा ऑफ चंद्रगिरी से क्या करता है? एक छोटी सी जमीन खरीदता है. छोटी सी नहीं, मतलब जमीन बहुत बड़ी थी. And they believe they made one of the finest art of that time, and that was called as Fort St. George. That was called as और इसी के इर्द गिर्द. So 1639, Francis Day, an officer of East India Company, brought Madras from Raja of Chandragiri, where they constructed Fort St. George. And gradually, Madras became. इसको हटाऊं? अच्छा.
and gradually Madras became their headquarter in south or on the eastern coast. नहीं, इंग्लिश है, इंग्लिश की बात कर रहे हैं. वो फ्रैंकोई मार्टिन था नाम. अच्छा, डे मतलब डे आ गया तो क्या मानो यार, ये मतलब बड़ा खतरनाक लॉजिक था, ये मत लगा देना. फाइन. So the Bombay, which was with the King Charles के Prince Charles के पास जो था, King Charles then England का जो राजा था, 1668 में they got Bombay. So 1639 they purchased Madras. 1668 they got Bombay. From King Charles II, जो उस वक्त का राजा था. Continuing this, 1690 Job Chernock, Job Charnock, he established a factory at Sultanati. पहला स्टेप. अभी सुनते जाना, अभी कहानी का सस्पेंस पर खत्म किया गया. He formed a workshop at Sultanati on the banks of river Hooghly. ठीक है. 1698 में through a फरमान from Aurangzeb, they got जमींदारी of सुल्तानती इनके पास था और दो गांव. From a Mughal फरमान in 1698, they got जमींदारी of Govindpuri, Sultanati and Kalikata, which gradually developed into city of Calcutta. Which gradually developed into city of Calcutta. So this is how they got the three major cities. Bombay, they purchased it. Portuguese ने बॉम्बे को बसाया, फिर वो उधर से रॉयल फैमिली में चला गया और बाद में 1668 में they got it from King Charles II. उसके बाद which city? मद्रास. 1639 जमीन खरीदी, उस पर फोर्ट बना और फिर उस फोर्ट के आसपास शहर बसने लगा. दैट वाज मद्रास. 1690 सुल्तानती में ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली उन्होंने क्या किया, एक वर्कशॉप स्टैब्लिश किया. 1698 में उसके आसपास के दो और गांव की उनको जमींदारी मिलती है, जमींदारी ऑफ सुल्तानती, कालिकाता एंड गोविंदपुरी. और यही तीनों गांव आगे यहाँ पे बनता है फोर्ट विलियम्स. हाँ, ये फोर्ट विलियम्स बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे. तो फोर्ट विलियम्स, कैलकाटा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास, और ग्रेजुअली इन्हीं गांव के आसपास दे डेवलप्ड द सिटी ऑफ कैलकाटा वाज established. The city of Calcutta was established. हाँ, लाल किला उससे पहले का बना, वो भी आज है. हमने कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया. These are marvels. आप इनको, हमारे जमीन पे है ना, हमारी जमीन पे. So this is how French and British they rules. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? अच्छा, ये जब तक औरंगजेब रहा. So when we say if you talk in timeline, पानी पिलवा दो यार. मैं 2 बार ये बेल बजाई, बेल काम नहीं कर रही क्या? इसको चलवाओ, चेंज करवाओ. इसमें कुछ है भी. अच्छा, चलो पानी पिलवा दो. You have next class from 5:30. 5. You have 30 minutes now.
आज सिर्फ 4:30 ठीक है, तो वी आर हैव ओनली 4:30 fine. To see, like at this stage everyone is disciplined in the class. Why? Because I am present here. डर नहीं है, डरा हुआ मत है, to be scared of. But there is someone who is controlling or who is commanding this class. That's me. You are not talking to each other, you are not looking into your phones. You are, but ठीक है, चलता है, ठीक है. You are looking into phones and it is not harmful unless and until I point it out. खैर, so you are not looking, you are not talking to each other, you are concentrating here and you are following a discipline. By the time I leave the class, what will happen? Chaotic situation आएगी, छोटा सा ही सही लेकिन chaotic situation आएगी. ये हर क्लास में हुआ, ये हर स्कूल में हुआ, everywhere this is the normal thing. This is indeed a normal thing. 1707 is a very important year in Indian history. Why? Aurangzeb died. And Aurangzeb is the last Mughal whom you can term as an emperor. Empire, it's big. After that you will find later Mughal rulers. They're not later Mughal emperors, no. But the term emperor, which is like empire वाली जो चीज़ थी, वो किसके साथ है? वो सिर्फ औरंगजेब के साथ ख़त्म हो जाती है. Means the central authority which was, इन्होंने कोशिश की, ऐसा नहीं है that British didn't fought औरंगजेब, कोशिश करी इन्होंने, लेकिन उसने बहुत स्मूथली जो है इनको जगह में आपने दिखाई कि you are a trader, don't be more than that. But as soon as Aurangzeb died, they saw an opportunity. Everyone. By that time, British, like 1668, 1674, they had a treaty with Dutch को हटा दिया. सिर्फ French और मतलब by the beginning of 18th century, it was only French and British who were fighting for the contender over India. Who were fighting for their being a contender over India. अंग्रेज उसके बाद काम करना शुरू कर दें. फॉर एग्जाम्पल 1717 देर इज अ फरमान फ्रॉम फारूक सियार. फारूक सियार वॉज द सेकेंड रूलर आफ्टर औरंगजेब, एंड दैट फरमान वॉज समथिंग विच वॉज लाइक ही गेव एवरीथिंग टू द ब्रिटिश. और ग्रेजुअली अगले 1707 डाइड, औरंगजेब डाइड, एंड नेक्स्ट 50 years ब्रिटिश वर कंट्रोलिंग इंडिया. 1757 plus E. See, they just took them 50 years to make a control, and by Plassey they were controlling not only Bengal, they were controlling South as well. Karnataka, Hyderabad, all these were controlled after this. So tomorrow we will start with 1717 Farman that the English got. Then we will delve into the Carnatic Wars, and from there we'll go to Bengal. Fine. So this will be, and tomorrow I'll try to start Robert Clive and Warren Hastings as well. So till 1764 we will be studying in the course of battles. Thereafter, once the British will start ruling, you can say the center of studying history will be on the basis of governors and governor generals. फिर हम उनको सेंटर बना के कि उनके टाइम पे क्या क्या हुआ वो पढ़ेंगे. ठीक है. Before I will enter into 1800, so till 1799. Before I will enter into 1800, we will complete Maratha and Mysore. Fine. Thereafter, again till 1857, we will again be in the pattern of governors and governor generals and the subsequent acts that came. ठीक है. Thereafter, after 1857, we'll take one short break in terms of reading history, and we'll go back and we'll talk about the socio-religious reforms in 19th century. Then what happened after 1857? और one thing, अगर 1857 के बाद flow बना रहा पढ़ने का जो हम पढ़ रहे हैं, तो I'll not talk about socio-religious reforms that we can do at the end as well. So there are two ways. अगर flow अच्छा बना रहा, that okay 1857 के बाद एक continuation में कहानी चलती रही,
What I'll do is I'll skip the socio-religious reforms. I'll not skip means ऐसा नहीं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा, बट बिकॉज वो एंड में ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है. After completing everything, we'll take 2-3 extra classes. I'm not completing whole history. After completing modern part, so we'll take socio-religious reforms and tribal movements as a separate. क्योंकि वो क्या होता है ना, उसको पढ़ने जाओ तो हिस्ट्री का फ्लो टूट जाता है, क्योंकि वो अलग से वापस पीछे जाना पड़ेगा. We'll talk about that, but we'll talk about that in the end. ठीक है, so don't worry. सर वो नहीं होगा, वो पहले हम हिस्ट्री एज अ टाइमलाइन ही चलेंगे. ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच.